Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Premanam Sankirtan Jagya ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Hare Krishna. I was trying to sleep in there and I couldn't sleep, so I thought I would join the party. I was missing all of you, and absence makes the heart grow fonder. Even Adam? Yeah, put on here. We were missing you! Huh? What? I'm too mean, I'm always yelling at you. I'm always chastising you, correcting you, challenging you, pushing you, dragging you. We got David to move up with the men now. He's feeling brave, more brave. In Russia, the ladies are stronger, so, but here might be a little different, you know.
रूस में जो है महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ कुछ और। Sorry, Devaki. मुझे क्षमा Srivas, कीजिएगा। sorry. आप मुझे क्षमा कीजिएगा। Hare Krishna. So, we need food for the soul. हमें आत्मा के लिए भोजन We चाहिए, need mercy. कृपा चाहिए। That's like a petrol. ये ईंधन के जैसा है। I could feel it in there. मैं महसूस कर पा रहा I हूँ। was saying, Krishna, you have to help me get better. You know, everybody's like, they're ready to like have a, you know, a revolution. They're ready to pound on the door, you know? I was getting nervous. Yeah. मैं कृष्णा से We प्रार्थना करने demand Hari-katha, you know? मैं कृष्णा से प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा था। लोग कितने भूखे हैं इस हरि कथा कृष्ण कथा के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है कि हरि कथा चालू नहीं होगी तो। So everyone ready to go on strike, you know? सब लोग हड़ताल पे जाने के लिए तैयार थे। So I cannot be peaceful sitting there. तो मैं शांति से अंदर बैठ नहीं पा रहा था। So we had to come out. तो मुझे बाहर आना पड़ा। So I'm happy to see all of you. तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलकर। And we need each other. और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। We need each other. Otherwise, if we don't have anyone to hear and chant with, how will we think about Krishna? तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है ताकि हम श्रवण कीर्तन कर सके, वरना हम कृष्ण के बारे में स्मरण कैसे कर पाएंगे? How will we remember that we're servant of Krishna? हम कैसे याद रख पाएंगे हम कृष्ण के दास हैं? How will we remember that we're a soul? हम कैसे याद रख पाएंगे कि हम आत्मा हैं? Because the only thing we'll think with the body, we'll think about the body and bodily relations. क्योंकि हम एकमात्र चीज़ सोचेंगे हमारे शरीर और हमारे शरीर से संबंधित लोग। We'll think about the serving in the Maya's family, not Krishna's family. हम माया के परिवार में सेवा करने के बारे में सोचेंगे बजाय कृष्ण के परिवार में। Krishna samsar, Guru samsar, same. कृष्ण संसार गुरु संसार एक ही है। That means soul platform. इसका मतलब आत्मा का स्तर। Then I saw Gurudev's quote of the day. Can I share it with you? और मैंने आज के गुरुदेव Just to open up our discussion. क्या मैं आप लोगों के साथ इसको बांट सकता हूँ ताकि हम और थोड़ी खुलकर चर्चा कर सकें? Srila Govinda Swami. He was speaking in Washington, D.C., June 11, 1995. वॉशिंगटन डीसी में जून 11, 1995 में। I think I was there. लगता है मैं वहाँ मौजूद था उस। If I remember correctly. अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो। So Srila Gurudev said, if you have not put Krishna on the platform of love, गुरुदेव ने कहा अगर आप कृष्ण को अपने प्रेम के स्तर पर नहीं रखा है, you have put his body and bodily relations on the platform of love. आपने शरीर और शरीर से संबंधित लोगों को प्रेम के स्तर पर रखा है। And as long as one has not put Krishna on the platform of love, और जब तक कृष्ण ने किसी को प्रेम के स्तर पर नहीं रखा है, how can one think of Krishna? कैसे कोई कृष्ण के बारे में सोच सकता है? Make this little tighter. As long as one has not put Krishna on the platform of love, how can one think of Krishna? जब तक किसी ने कृष्ण को प्रेम के स्तर पर नहीं रखा हो, कैसे कोई कृष्ण के बारे में सोच सकता है? And then how can one surrender unto Krishna? और कैसे कोई कृष्ण को शरणागत कर सकता है? It's impossible. यह असंभव है। So I remember when I first came to Bhubaneswar and Gurudev kept saying, you know, put Krishna on the platform of love. तो मुझे याद है जब हम भुवनेश्वर आए, गुरुदेव हमेशा ये बात कहा करते थे, कृष्ण को हमेशा प्रेम के स्तर पर रखो। I'm thinking I'm like a brand new person. और मैं सोचता था मैं बहुत ही नया व्यक्ति हूँ। I just met Gurudev. मैं बस गुरुदेव से मिला हूँ। I'm trying to get out of Maya. बस माया से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। And Gurudev telling, put Krishna on the platform of love, otherwise you cannot surrender. और गुरुदेव बता रहे हैं कि आप कृष्ण को प्रेम के स्तर पर रखो वरना आप शरणागत नहीं कर पाओगे। So I'm thinking, how do you put Krishna on the platform of love? तो मैं सोचने लगा कृष्ण को प्रेम के स्तर पर मैं कैसे रखूंगा? And I kept praying about that every time Gurudev said, put Krishna on the platform of love. और हर बार मैं इसके लिए प्रार्थना करता रहा जब भी गुरुदेव ये बात कहते थे कृष्ण को प्रेम के स्तर पर रखो। And then I understood that this is requirement. और तब मैं समझ पाया यह सब में आवश्यकता है। That means if we want to get out of Maya and we want to achieve in our spiritual life and reach the goal, then this desire of how do I put Krishna on the platform of the love, right, on love, that desire has to be cultivated.
अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में बने रहना चाहता हूँ, लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कैसे मैं कृष्ण को प्रेम के स्तर पे रखूँ। Because Krishna says to show special mercy, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अपनी विशेष कृपा देने के लिए I destroy all tamagun. मैं सारा तमोगुण नष्ट कर देता हूँ। This thing is not tight enough? ये सही से Right? So everything from, here, make that tighter. Everything from purification तो सभी कुछ शुद्धिकरण से शुरुआत होती है, to cultivation of knowledge, ज्ञान की प्राप्ति, destroying all of the doubts, सारे संदेहों का नष्ट होना developing in our bhakti, in our devotion, और हमारी भक्ति में विकास करना, all the way to Krishna prema. कृष्ण प्रेम तक पहुँचने के लिए That requires Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है। But if we don't have strong enough desire to put and understand how to put Krishna on the platform of the love, on love, why should we think or expect that Krishna will just shower mercy on us? तो अगर हमने पर्याप्त इच्छा प्राप्त नहीं की है, कैसे मैं कृष्ण को प्रेम के स्तर पे रख सकूं, तो कैसे अब कृष्ण अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे। So if we want to get out of Maya, तो हम माया से बाहर आना चाहते हैं, Krishna says you have to surrender to me. कृष्ण कहते हैं मुझे शरणागत But हो। without love for Krishna, how we're going to surrender to Krishna? कृष्ण प्रेम के बिना हम कैसे कृष्ण को शरणागत कर सकते Then how we're going to get out of हैं? Maya? तो हम माया से बाहर कैसे आएंगे? So love for Krishna is required. तो कृष्ण के प्रति प्रेम आवश्यक है। Then the question is, well, how do I get it? तो अब सवाल ये है कि मुझे ये प्राप्त How कैसे, do I develop it? कैसे मैं इसका विकास How करूं? do I increase the desire? How do I prove to Krishna that this is my interest and my desire and I want to cultivate that? और कैसे मैं कृष्ण को ये बात साबित कर पाऊंगा कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी रुचि है, मैं इस इच्छा को प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेगा। Because it's a need, it's a requirement क्योंकि ये आवश्यकता, ये जरूरत है मेरी। to get mercy. Everything is based on mercy. सभी कुछ कृपा पे आधारित है। So Prabhupada said, problem is you don't understand, conditioned soul doesn't understand what is the need of his soul. श्री प्रभुपाद बताते हैं बद्ध जीवात्मा की समस्या ये है कि वो आत्मा की जरूरत को नहीं समझते। When they, one time they were saying in a GBC meeting, they're asking all the gurus, like, you know, what is the purpose of the guru? What is the guru giving to the disciple? एक बार जीबीसी मीटिंग में ये बात सवाल उठाया जा रहा था कि गुरु जो है शिष्य को क्या देता है, गुरु का क्या कर्तव्य है शिष्य के प्रति। And they were saying so many different types of things, you know. और वो अलग-अलग बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। And then Srila Govinda Swami said, he wrote on a piece of paper, you have to give them Krishna. और श्री गौरव साहब महाराज ने बस एक ही लाइन में लिखा, एक खत में लिखा कि आपको बस उनको कृष्ण देना है। So Guru said they don't like this answer, you know, so they just like threw it in the trash, you know. और गुरुदेव का उनको ये उत्तर पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको उठा के कचरे के अंदर फेंक दिया इस उत्तर को। Gurudev's like, give them Krishna, you get Krishna, you got everything else. गुरुदेव ने कहा इनको कृष्ण दे देंगे, इनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। Right? Attract their desire to want to develop love for Krishna. Let them be convinced and convince Krishna. और उनको आकर्षित उनको होना चाहिए, कैसे वो कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा तीव्र हो, कैसे वो कृष्ण की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो, ये उनको हमें देना है। This is the need of the soul. ये आत्मा की जरूरत है, Otherwise, we cannot even get out of Maya. वरना हम माया से भी बाहर नहीं आ सकते। Well, I'm trying to cultivate my detachment. वो मैं अपना जो है निराशक्ति उत्पन्न करने का I'm प्रयास trying कर रहा to हूँ। cultivate knowledge. मैं ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास I'm कर रहा हूँ। doing my dharma, my sadhana. मैं धर्म अपना कर रहा हूँ, अपना साधना कर रहा हूँ। Right? We're thinking we're doing everything. हम सोचते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। I'm trying to control my mind and my senses. मैं अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा I'm हूँ। trying to understand what does Krishna want me to do. मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं। That all sounds very impressive. तो सुनने में बहुत उत्साहित करने वाला लगता है। But what is the point of all of that? लेकिन इन सब चीजों का क्या मतलब है? Krishna says, by all of the Vedas I am to be known. कृष्ण कहते हैं सारे वेदों के द्वारा तुम मुझे जानो। So the whole point of the whole process of all the Vedic knowledge and literatures is to know Krishna. तो ये सारे वैदिक ग्रंथों का एक ही मतलब है, कैसे हम कृष्ण को जान पाएंगे, And to surrender to Krishna. कैसे शरणागत कर पाएंगे। Not complaining, grumbling and complaining, शिकायत नहीं करना, शिकायत नहीं उठानी है,
not dragging our feet. अपने पैर नहीं घसीटने, Some loving, affectionate mood has to be there. प्रेम और स्नेह का भाव होना चाहिए। And if we don't have that, we should lament that, और अगर हमारे पास नहीं है तो हमें शोक करना चाहिए इस बात का, because otherwise how will we get mercy? वरना हमें कृपा कैसे मिलेगा? We're completely dependent on Krishna's mercy. हम पूरी तरह निर्भर हैं कृष्ण की कृपा पे। Right? With Krishna's mercy, the impossible becomes, or the impossible becomes possible. कृष्ण की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। Without His mercy, what can we do? उनके कृपा से हम क्या, उसकी कृपा के बिना हम क्या कर सकते हैं? It says not even a blade of grass moves without the will of the Lord. ऐसा कहते हैं भगवान की मर्जी के बगैर एक तिनका भी नहीं हिलता। What do we think we're manipulating? हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसको नियंत्रण में कर रहे What हैं? power and control do we think we have to think and to act? हम क्या सोचते हैं, हमारे पास क्या शक्ति है, क्या नियंत्रण है कि हम कुछ सोच सके, कुछ कार्य कर सके? Right? Krishna says the bewildered soul, he's bewildered by the false ego. He's thinking that he's doing everything. कृष्ण कहते हैं अपने मिथ्या अहंकार से भ्रमित हो जाने की वजह से वो सोचते हैं जीवात्मा कि वो सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ सोच रहा है। When in reality, Krishna says it's all being done by me. और कृष्ण कहते हैं असल में ये सब मेरे द्वारा किया जा रहा है, Directly or indirectly. सीधे तरीके से या दूसरे तरीके से। Right? Krishna is the master of mind and intelligence. कृष्ण मन और बुद्धि के स्वामी हैं। He's the owner of the body, mind, and the soul. वो मालिक है शरीर, मन और आत्मा की। And all of those energies, superior and inferior, they're all controlled by Krishna. और ये सारे ऊंची पराशक्ति और अपराशक्ति सारे कृष्ण के नियंत्रण में है। So in our ignorance and false ego, we think, no, I belong to myself. और हमारे अज्ञान में, हमारे मिथ्या अहंकार में हम सोचते हैं हम स्वयं के हैं। And I'm thinking like this. और मैं ऐसा सोच रहा हूँ। I have this idea. I have this plan. मेरा ये विचार है, मेरी ये योजना है। And I'm going to use my strength and action to make that plan happen. और मैं अपनी शक्ति और अपना पूरा उद्देश्य लगाऊंगा कैसे मैं उस योजना को पूरा कर सकता हूँ। So if Krishna makes you paralyzed, तो अगर कृष्ण आपको पूरी तरह निष्क्रिय बना देंगे शरीर को, what will you do? फिर आप क्या कर पाएंगे? Even you cannot lift your hand, अपना हाथ भी नहीं उठा पाएंगे आप। right? Or if he gives you like Alzheimer's or like like you forget everything, right? You can't even remember your children's name. या कृष्ण आपको कुछ ऐसी बीमारी दे दे जहाँ पे आपको कोई चीज़ आपकी याददाश्त चली जाए, आपको अपने बच्चों का नाम भी नहीं याद रहे। So what are we going to do on our own? What do we think we're doing on our own? तो हम स्वयं से क्या कर सकते हैं? हम क्या सोचते हैं हम स्वयं से कर पाएंगे? But bewildered by false ego, we're forgetting about Krishna, we're forgetting about the soul, we're forgetting about the Sanatana Dharma, and in bodily consciousness, we're going about this so-called business of taking care of the family in the name of Dharma. और हम इस अपने मिथ्या अहंकार से आत्मा को भूल जा रहे हैं, परमात्मा को भूल जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को भूल जा रहे हैं और माया के प्रभाव में आके माया के परिवार की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से पूरी तरह भ्रमित हैं, भटके हुए हैं। I'm serving dutifully. मैं पूरी कर्तव्य से अपने कामों को निभा रहा हूँ। And my baby, my child, he is Krishna. और मेरा बच्चा He is my little Krishna. मेरा छोटा कृष्ण है। And all the little mini Krishnas are running around, crashing into each other. और ये छोटे-छोटे कृष्ण एक तरफ इधर-उधर भागते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। I imagine like in the Indian preschool, like when the kids didn't see any other kids and they're thinking and they're dressing them kid up like they're Gopal and they're Krishna, right? Then he has to go to school and everybody's dressed up like Gopal, right? मैं कल्पना कर सकता हूँ कैसा होगा वो माहौल जब छोटे-छोटे भारतीय जो स्कूल के छोटे बच्चे खुद को गोपाल या कृष्णा समझते हैं और उससे पहले वो किसी भी बच्चे से नहीं मिले जो इस तरह गोपाल या कृष्णा की नकल करा हो। आते हैं। It must be like a culture shock, तो उनको अचानक से झटका लगता होगा, संस्कृति का झटका। The little kids like running the whole house. He's like, I'm God, I'm Gopal, छोटा बच्चा पहले अपने घर में भगवान खुद को भगवान समझ के गोपाल समझ के घर पे दौड़ता रहता था। And the families are practically worshiping them, परिवार जो उनकी पूजा करता है। Then they go to school and then the other Gopal says, hey, sit down, और फिर वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते हैं और दूसरा गोपाल वो कहता है चुपचाप बैठो। You're not Gopal, I'm Gopal. तुम गोपाल नहीं, मैं गोपाल। Right, the biggest kid, the toughest kid, right? He's Gopal, सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा बच्चा होता है स्कूल में, वो गोपाल बन जाता है। All right, I'm Gopal here. You all sit down, relax, मैं गोपाल यहाँ, तुम सब चुपचाप बैठो यहाँ। So might is right. शक्तिशाली वो जीता हो। Right?
Well, whoever's the smartest, they say, look, I'm the smartest here. You're all a bunch of fools. Sit down, you know? या जो सबसे बुद्धिमान रहेगा जो आप सब मूर्ख हैं बस चुपचाप बैठो मैं वो सबसे बुद्धिमान हूँ In India, maybe there's like different way to measure like who has some standard. हो सकता है भारत में अलग तरीका हो मापने का किसका कौन स्टैंडर्ड पे है Or I'm from this family, हो सकता है मैं इस Brahmin परिवार से family. मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ Whoa. Right? Then you pull out your string, you know, I'll curse you. और फिर वो अपना धागा निकाल के आएंगे मैं तुम श्राप दे दूंगा Be careful. Be सावधान careful. रहो मुझसे सावधान रहो Right? I'll curse you. मैं तुमको श्राप दे दूंगा So this bodily attachment, Prabhupada says, this is the material disease. प्रभुपाद बताते हैं ये शारीरिक आसक्ति ये भौतिक रोग है Krishna said, you want to forget me? I'll make you forget me. कृष्ण कहते हैं आप मुझे भूलना चाहते हैं मैं आपको मुझे भुलवा दूंगा You want to forget your soul? You want to forget the responsibility of your soul? अगर आप आत्मा को भूलना चाहते हैं आत्मा के कर्तव्य को भूलना चाहते हैं You want to forget the need of your soul? आप आत्मा की जरूरत को भूलना चाहते हैं Krishna says, I'll make you forget. कृष्ण कहते हैं मैं आपको भुलवा दूंगा That means clouds are required. इसका मतलब कुछ बादल चाहिए Right. करने के लिए That's to block the sun, right? ताकि सूर्य को ढका जा सके So big false ego, big tamagun, like big cloud. तो बड़ा अहंकार बड़ा तमोगुण मतलब बहुत बड़ा बादल लाया गया ढकने के लिए Then we cannot understand anything that is transcendental. फिर हम कुछ भी दिव्य चीजों को समझ नहीं Only the पाएंगे body सिर्फ शरीर को देखेंगे and the mind. मन को Even sometimes people are disturbed, right? कई बार लोग परेशान होते हैं कई And I बार said, why are you disturbed? मैं उनसे पूछता हूँ इतने परेशान So क्यों हैं? my mind is disturbed. तो मेरा मन बहुत परेशान है And I said, well, what is your mind telling you? फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपका मन आपसे क्या कह रहा है And they're like, I don't know. तो पता नहीं क्या कह रहा है It's just disturbed. I don't know. I don't know what is the root of that disturbance. ये बस परेशान है मुझे पता नहीं इस परेशानी की जड़ क्या है It's like a little kid when you go to the doctor, you know, the doctor just says, what's wrong? You say, I just don't feel good. जैसे छोटे बच्चे को हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके जाते हैं डॉक्टर उनसे कुछ पूछता है बच्चे कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ मुझे अच्छा नहीं लग You रहा can't like pinpoint it. वो कुछ एकदम अच्छे तरीके से He's पता just नहीं crying, doesn't feel good. वो बस रोता रहता है उसको अच्छा नहीं Cannot लगता, even अच्छा explain why is it like that. और वो व्याख्या नहीं कर पाता है ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ You're not like that, right? आप ऐसे नहीं है ना So we're not even aware on bodily platform तो यहाँ तक कि हम शरीर तक भी हमारी जितना बहुत अच्छे से or नहीं है। mental platform. मन के स्तर पे भी नहीं है We're bewildered even on that platform. हम तो उस स्तर पे भी पूरी तरह भ्रमित हैं Right? How do I take care? How do I not get sick? What should I eat? You know, it's like we're constantly trying to keep up with it, isn't it? कैसे मैं ध्यान रखूं कैसे मैं बीमार ना हूं कैसे मैं शरीर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करूं इस तरह से निरंतर हम कुछ न कुछ सोचने करने का प्रयास करें How to manage it? और उसको व्यवस्थित करने का Right? So प्रयास to करें manage the body and manage the mind and to keep it peaceful and healthy, right? In this day and age is very difficult. और अपने शरीर को अपने मन को व्यवस्थित रखना शांत रखना सुखी रखना ध्यान रखना इस युग में बहुत ही मुश्किल है And then the family, oh, my mother's sick, oh, my son, my daughter is sick, my husband is sick, right? We're completely worried, you know. और कई बार परिवार में होता है कि मेरी माँ बीमार है मेरे पिता बीमार है बच्चे बीमार हैं या पूरी तरह से कोई बहुत ज़्यादा चिंता में है परिवार के लोग They're suffering, they're in pain, दुख भोग रहे हैं दर्द में हैं they're crying, और वो रोते हैं right? Then we cannot think, we cannot sleep, we cannot function, isn't it? तो हम My न mother's crying, my grandmother's crying. तो हम ना तो सोच पाते हैं ना सो पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं पिता रो रहे My दादी रो wife रही is है crying, पति रो रही है my children are crying, everybody's crying. बच्चे रो रहे हैं सभी रो रहे हैं How you doing, sir? Great, everything's great. Everyone's crying, but I'm doing pretty good, you know, in the face of it all, you know. आप कैसे हैं उनको जब पूछा जाता है आप कैसे हैं तो वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ सब लोग रो रहे हैं घर में लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ मैं किसी तरह से Take सामना another करूँ। one, you know, take some more. Drink some more wine, you know, you'll be all right, you know. तो और थोड़ा पीने शराब पीजिए आप Take अच्छे some more रहेंगे। narcotics, you know. और ज़्यादा नशीली चीज़ें लीजिए Just dull the ताकि आप अच्छे pain, रहें। dull the pain.
ताकि इस दर्द को जो है बस किसी You'll तरह be शांत किया जा fine. सके। Like the drug addict, just take some of these, you'll be all right, You'll feel better after that, You might be dead, but if you don't die, you'll feel better, ये और थोड़ा नशा ले लो, इससे थोड़ा और अच्छा महसूस करोगे। इससे तुम मरोगे नहीं, अगर मरोगे नहीं तब तो अच्छा, तब ठीक रहोगे, अच्छा महसूस करोगे। Nowadays, very dangerous. अभी ये बहुत खतरनाक चीज़ है। You don't know what are you taking. आपको पता ही नहीं आप किस तरह का नशा कर रहे हैं। Now it's very risky, very dangerous situation. बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। So the bodily attachment and attachment to the family is the root of the problem. तो परिवार और परिवार से आसक्ति सारी समस्याओं की जड़ है। Then it says in the Bhagavatam, every other material desire and sinful desire is coming off of that attachment. और श्रीमद् भागवत में बताया है किसी भी तरह की पाप की इच्छा और भौतिक इच्छा सिर्फ इसी आसक्ति की वजह से उत्पन्न होती है। Because anything we're doing that's not servicing Krishna's family for Krishna's pleasure, it's more or less sinful activity, karmic activity. कोई भी कार्य हम कृष्ण के परिवार प्रसन्नता के लिए, कृष्ण संसार की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कम या ज्यादा पाप कर्म होता है। So if we're just attached and serving in Maya's family, you can call it dharma all you want. तो अगर आप आसक्त हैं अपने भौतिक परिवार की सेवा करने लगे हुए हैं, आप इसको धर्म कह सकते हैं अपने And you can try to convince yourself that you're doing your duty. और आप स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास कर सकते हैं कि हाँ आप अपना धर्म कर रहे हैं। But it definitely doesn't make it spiritual. लेकिन इससे आध्यात्मिक नहीं हो जाएगा। For sure. अवश्य। That's why I think Srivas, you were reading the verse from Srimad Bhagavatam, right? That if all of your activity, all of your occupation, it's not making you to be attracted to hearing and chanting and serving Krishna, then it's a waste of time. श्रीवास श्रीमद् भागवतम में भी बता रहे थे कि कैसे आप किसी भी तरह के पैसे कर रहे हो अपने जीवन में, अगर ये सारा कार्य आपको श्रीमद् वासुदेव के संदेश को श्रवण कीर्तन करने के लिए आकर्षित नहीं करता है, तो ये कम या ज्यादा समय की बर्बादी है पूरी तरह से। Yes, I'm doing my varnashram dharma. हाँ, मैं अपना वर्णाश्रम धर्म कर रहा हूँ। But we're not really doing for Krishna, for Krishna's pleasure. लेकिन हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। It's just materialistic consciousness, materialistic activity for materialistic motivation. ये सब हर तरह से भौतिक कार्य है, भौतिक उद्देश्य के लिए है, भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। On the bodily platform of life. और शारीरिक स्तर पे है। Now you can try to convince that you're doing your duty, you're doing dharma, you're doing varnashram. You can try to convince yourself of that. आप स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास कर सकते हैं, आप वर्णाश्रम धर्म और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। And try to call it spiritual. और उसको आध्यात्मिक नाम दे सकते हैं। But if it's not really coming from Krishna and for Krishna, then it's Maya. लेकिन अगर ये कृष्ण से नहीं आ रहा है और ये कृष्ण के लिए नहीं है, तो ये कम या ज्यादा माया है। So Krishna says, if it's coming from me and you're doing it for my pleasure, that activity will purify you and liberate you. तो कृष्ण कहते हैं जो गतिविधि आप मेरे लिए कर रहे हैं और मुझसे आ रहा है, तो ये आपको मुक्त करेगा और आपको कर्म बंधन से मुक्त करेगा। What do you need? An invitation or something? आपको क्या चाहिए? आपको निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? Come in here, sit down. आइए बैठिए। Here's some Hari-katha, Krishna-katha. आइए कुछ हरि-कथा कृष्ण-कथा श्रवण कीजिए। What are you going to do? Just walk by and say, "Oh, I got the darshan of the Maharaja," क्या कहेंगे? इधर से again, यहाँ से गुजरेंगे और कहेंगे, "ओ, मैंने महाराज का दर्शन पाया." Oh, Maharaj glanced at me. I got everything, ओ महाराज ने मेरी तरफ अपना दृष्टि किया, मुझे सब कुछ मिल गया दृष्टि से। The Guru is trying to explain something. He's like, "No, he glanced at me. I got everything." गुरु आपको कुछ बताने का प्रयास करे, कह रहे नहीं, गुरु ने मेरे दृष्टि डाल दी, मुझे सब मिल गया है। It's all sentimental foolishness, isn't it? ये सब भावनात्मक है, मूर्खता है ये सब। So this attachment is very, very deep rooted to the body, bodily platform, consciousness, bodily relations, very, very deep rooted problem. तो ये आसक्ति शरीर से, शरीर के स्तर के संबंधों से, इस शरीर की चेतना से एक बहुत ही गहरी समस्या है। Ropes and anchors in the mud. रस्सियाँ और लंगर पूरी तरह कीचड़ में seriously stuck there. बहुत ही गंभीरता से उसके अंदर फंसी हुई है। How the boat is going to move? तो ये नाव आगे कैसे बढ़ेगा? Right? The material body is said to be like a boat. ये भौतिक शरीर को नाव का उदाहरण दिया गया है। Right? And Krishna is like the wind. और कृष्ण
पवन के झोंके जैसे। So by Krishna's wind and mercy pushing on the boat, then we're supposed to cross over the material ocean and go to the spiritual side. तो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के इस पवन से ये जो नाव है इस भौतिक भव सागर से पार होकर आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। But the boat's not moving लेकिन ये नाव बढ़ नहीं रहा है आगे, because we're not attracted क्योंकि हम आकर्षित नहीं हैं and we're not so motivated by heavy stick. और हम इस कड़े डंडे प्रहार से हम उतने ज़्यादा So we're आगे नहीं बढ़ stubbornly not allowing ourselves to be attracted तो अपने जिद्दीपन से हम अपने आप को आकर्षित नहीं होने दे रहे हैं and conveniently and cleverly trying to avoid the stick. और चालाकी से हम डंडे से बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। How's that for motivation? ये कैसा है उद्देश्य के लिए? That's the way it's going to have to go. क्या इस तरह से ये सब चल पाएगा? We can be motivated by love and affection or by a heavy stick. तो हम प्रभावित प्रेरित हो सकते हैं प्रेम और स्नेह से या फिर डंडे के प्रहार से। Krishna's devotee rather do it by loving affection and inspiring you and encouraging you. तो कृष्ण के भक्त तो उसको प्रेम स्नेह से करना चाहते हैं, आपको प्रेरित करके आपकी तरफ खींचना, आकर्षित करना And चाहते हैं। if we will not take it in that mood, then only heavy stick. और अगर हम इस भाव से उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो दूसरी चीज जो है वो मोटा डंडा। Don't blame me. I didn't make this philosophy up, you know. तो मुझ पे दोष मत डालिए, मैंने ये सिद्धांत नहीं बनाया। And then we're getting heavy stick and we're saying, oh, it's Gurudev's fault, you know. और जब हमें कड़ा प्रहार मिलता है हम कहते हैं नहीं ये गुरुदेव की गलती है, This is why I'm suffering. इनके वजह से मुझे दुख हो रहा है। We're not cooperating and we're like suffering and then we're saying, well, it's Gurudev's fault. हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं और हम कहते हैं ये गुरुदेव की गलती है, Krishna's fault. कृष्ण की गलती है। And then Gurudev sometimes laughing and then you say, I'm suffering and the Guru's laughing. और कई बार गुरुदेव जब हंस रहे होते हैं तो कहते हैं मैं दुख भोग रहा हूँ और गुरुदेव हंस रहे हैं उसमें। How we can laugh like this? ऐसे वो इसमें हंस सकते I'm हैं। suffering. मैं दुख में हूँ, Well, cooperate. तो सहयोग Then your कीजिए, suffering will go away. आपका दुख चला जाएगा। We're not cooperating. हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, We're rebellious. हम विद्रोही हैं, We're very stubborn. हम बहुत जिद्दी हैं, We think we know better. हम सोचते हैं हम बेहतर जानते We हैं, have our own plan. हमारा खुद का योजना है, We don't care to really understand what is Guru and Krishna's plan. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना जानना चाहते हैं गुरु कृष्ण And की क्या therefore we're योजना trying to substantiate our understanding and our plan है। और वो हमारे योजना और हमारे Huh? We're trying to substantiate, establish. और हम अपने स्वयं की योजना को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, Because we know better, क्योंकि हम सोचते हैं हम बेहतर जानते हैं and then the world's not cooperating with us. और ये जगत हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। They all have a problem इन सब की समस्या है because they're not participating in this lila क्योंकि वो ये लीला में भाग नहीं दे रहे हैं। where I'm telling everybody what Krishna wants us to do. और मैं सबको बता रहा हूँ कि कृष्णा सबसे क्या चाहते हैं। I don't know what their problem is. मुझे समझ नहीं आ रहा है उनकी समस्या क्या है। It's not us हमारी कोई गलती नहीं, because we're fully surrendered. क्योंकि मैं पूर्ण शरणागत हूँ, We're completely sincere. मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, Nothing belongs to us. मेरा कुछ भी नहीं है, Everything belongs to Guru and Krishna. सब कुछ गुरु कृष्ण का है, Everything is for their pleasure. सब कुछ उनकी खुशी के लिए है। Only these people not cooperating. बस ये लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे They हैं, have problem with me. उनके साथ उनको कुछ समस्या है मेरे से, They're getting in the way of my love and devotion to Guru and Krishna. वो मेरे प्रेम और भक्ति के बीच में आ रहे हैं गुरु कृष्ण के प्रति। They don't understand. वो ये समझते नहीं है मुझे, This is problem. ये समस्या है। I understand, मैं सब कुछ समझता हूँ, but they don't लेकिन understand. ये लोग नहीं And समझते। who agrees with me, they also understand. और जो मेरे साथ सहमत है वो भी मुझे समझते Who हैं, doesn't agree with me, they don't understand. और जो मेरे साथ सहमत नहीं है वो मुझे समझते नहीं है, Neither they can hear anything. और ना ही वो कुछ सुन सकते हैं, They're not listeners. वो सुनते नहीं हैं। Then we're trying to control the universe. और हम फिर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। Sound familiar? सुनने में एक जैसा है, वैसे ही लग रहा है। So where are we going with this conversation? We can go in any direction you want. तो हम कहाँ जा रहे हैं अपने वार्तालाप में? हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। The place can blow up. ये जगह उड़ सकता है, फट We सकता could है। get nuked from Pakistan. Anything can happen here right now. पाकिस्तान कभी भी परमाणु बम यहाँ गिरा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Where's Gopal?
गोपाल कहाँ है? He left. Oh God. हे भगवान, I feel much safer when he's not near the red button, you know what I mean? मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ जब वो यहाँ होता है, उसके हाथ में वो लाल बटन नहीं होता है। When I find out he's the chief negotiator, I'm looking for an insurance policy, you know? जब मैं ये पता लगाता हूँ ये प्रमुख उनके साथ बातचीत करने वाले हैं, मुख्य बातचीत करता है, तो मैं अपने इंश्योरेंस एजेंसी को ढूंढने लगता हूँ। Some friends I have, they're all divesting in their stocks. When they hear that he's the chief negotiator, everybody's bailing out, you know? और जब मेरे कुछ मित्र हैं वो जब स्टॉक निवेश करने का सोच रहे होते हैं, वो सारा अपना निवेश वापस ले लेते हैं, क्योंकि जब पता चलता है गोपाल जो है इस बातचीत के प्रमुख व्यक्ति हैं। Don't think I'm talking behind his back because I tell him the same thing right to his face. ये मत सोचिए मैं उनकी पीठ पीछे कुछ बातें कर रहा हूँ, जब वो सामने होते हैं मैं उनके मुंह के सामने भी यही बात करता हूँ। Isn't it? ऐसा है या नहीं? I'm not shy about telling him. मैं इस पे कोई शर्म नहीं करता हूँ कोई बात कहने में। So, what's your problem? तो आपकी समस्या क्या है? Why you don't want to cooperate? आप क्यों सहयोग नहीं करना चाहते? You have a better plan? आपके पास कोई बेहतर योजना है? You have another way out क्या आपके of पास trouble? दूसरा तरीका है इस मुश्किल से बाहर आने का? You have another ticket? आपके पास दूसरा कोई टिकट है? You don't like this ticket? आपको ये टिकट पसंद नहीं आ रहा? You think there's another way out? आपको लगता है कोई दूसरा तरीका है बाहर निकलने का? Does he think he's the only guru? क्या ये सोचे यही एकमात्र गुरु है? Plenty of gurus there. What are you doing sitting here then? बहुत सारे गुरु हैं यहाँ उपलब्ध, तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? Right? I'm not paying you to come here, right? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए यहाँ आने के I'm लिए। not forcing you to come here. मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं की यहाँ आने के लिए। So you must be hearing something that's right, I think. तो आवाज़ से आप कुछ ऐसा सुन रहे होंगे जो आपको सही लग रहा होगा। I'm not making it up. तो मैं इसको I'm खुद से telling you, निर्माण don't कर रहा हूँ। blame me. I didn't make up this philosophy. मैं आपसे कह रहा हूँ उस पे दोष मत डालिए, मैंने ये सिद्धांत का निर्माण I किया। also have to follow it. I also have to accept it. मुझे भी इसका पालन करना है, मुझे I इस also have सिद्धांत to को स्वीकार cooperate. करना है, मुझे भी इसमें सहयोग करना है। Whether you feel good or you don't feel good. आप अच्छा महसूस करें, अच्छा महसूस ना करें। We're talking to Pitambar about sometimes you have to cook in the kitchen, right? The Matajis, they know also. कभी हम पीताम्बर प्रभु को कहते हैं कि वो उनको कुकिंग करना है, किचन में रसोई करना है, और कभी कभी माता जी भी कर सकती हैं। In India, भारत में very hard, isn't it? बहुत गर्मी होती है, And you can't say, oh, you know what? It's so hot in there today. I decided I don't want to cook. आप ऐसा कह सकते हैं आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं आज रसोई नहीं करूँगा। Right? You have to do. आपको करना ही होगा, Whether you like it or you don't like it. आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो। We want everything to be fun. हम सब कुछ मजे में करना चाहते हैं, How is it possible? कैसे संभव है? So when everything is going our way, then we can nicely so-called surrender, right? तो जब सब कुछ हमारी तरफ से तरह से चल रहा होता है, तो हम कहते हैं हम शरणागत कर सकते हैं। I was just reading one thing, it was saying, you know, people who were searching after the truth, when they hear the truth, then they very much like it. तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, बहुत अच्छी चीज़ उसमें बताई जा रही थी, जब लोग सत्य सुनते हैं तो उनको काफ़ी पसंद आता है शुरुआत में सत्य, Until the truth cuts too deep, जब तक ये सत्य बहुत गहराई में जाके काटने ना लगे तब तक, then they don't like it. तब फिर वो पसंद नहीं आता है। No, I'm searching after the truth, I love the truth, and then all of a sudden it's getting very deep. We're like, well, I don't know if I like this conversation anymore. लोग कहते हैं मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ, परम सत्य को जानना चाहता हूँ, लेकिन जब ये सत्य को काटने लगता है बहुत गहराई से, तो वो कहते हैं नहीं, शायद मुझे अभी सत्य इतना पसंद नहीं आ रहा। This is starting to feel like disturbing. अब मुझे ये थोड़ा परेशान कर रहा है, It's unpalatable. ये कड़वा है। Right? We want the truth until it cuts too deep. हम सत्य तब तक चाहते हैं जब तक वो हमारे अंदर गहराई से न काटे। Right? It's like, Maharaj, please preach to me. आप कहते हैं महाराज मुझे Sometimes प्रचार people come, कीजिए, please preach to me. मुझे आके कहते हैं मुझे प्रचार कीजिए महाराज, But don't say anything about my money. लेकिन मेरे पैसे के बारे में कुछ That's बताइए ना। number one. Even before the family, I tell you, honestly, don't talk about money. पैसे के बारे में बिल्कुल बात मत कीजिएगा, And don't talk about my family. मेरे परिवार के बारे में बात मत कीजिएगा। I have my responsibilities, my dharma. मेरा अपना कर्तव्य है, मेरा कुछ धर्म है उनके प्रति। So, and any other topic you want to talk about, except those topics.
और कोई अन्य विषय पे आप बात कर सकते हैं सिवाय इन दो विषयों के ऊपर बात कर। So whatever we like, whatever we're attached to, that's off limits. जो भी हम चीज़ों के प्रति आसक्त हैं, जो भी चीज़ें हमें पसंद है, हमें उसी को हम बनाए रखना चाहते हैं। It's like you're negotiating with, in a nuclear, negotiation. Certain things are off limits. जैसे आप वार्ता कर रहे हैं, शांति वार्ता कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर परमाणु बम के ऊपर जब बातचीत करनी हो, उस तरह से जब बातचीत की जाती है। Hare Krishna. We're going to do like this with Krishna. क्या हम ऐसा करेंगे कृष्ण के साथ? Krishna, I want to surrender to you. I want to have a relationship with you, but on our terms, on my terms. कृष्ण, मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नियम और शर्तों के आधार पर करूँगा। Can we do like this? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Why are we doing like this? तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? Everything going our way? Yes, I can surrender. सब कुछ अगर हमारे तरह से तरीके से चल रहा होता है तो हम कहते हैं मैं शरणागत कर सकता हूँ। Because we're getting everything we want. क्योंकि हमें वो सब कुछ मिल रहा है जो हम चाहते हैं। What happens if it's all not going your way? ऐसा होगा अगर सब कुछ हमारे तरीके से न चले। What if Krishna tells you opposite of what you want to do? क्या होगा कृष्ण आपको वो उसके विपरीत कहें जो आप करना चाहते हैं? Can you happily accept it? क्या आप खुशी से उसको स्वीकार कर पाएंगे? And try your level best to follow it, execute it? और अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे, उसको पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। Then all of a sudden, I was thinking about it. और फिर अचानक से कहते हैं मैं इसके बारे में सोच रहा But था। some doubts came. फिर कुछ संदेह आया मेरे मन में। So now I'm just, I'm praying to Krishna. और मैं कृष्ण को प्रार्थना I'm कर just रहा हूँ। asking him, really, what do you want? मैं असल उनको पूछ रहा हूँ, असल में आप मुझसे क्या Now चाहते it's हैं? not so clear. मुझे उतना साफ नहीं दिख रहा सब कुछ। So now some doubt is there. तो कुछ संदेह है मेरे मन I'm में। a little bit hesitating. मैं अब थोड़ा झिझक रहा हूँ। Now I don't know. मुझे अब पता नहीं। Now I have to try to figure it अब out. मुझे थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। I need some space. मुझे थोड़ा जगह चाहिए। खाली That's a जगह। good one, huh? I need some space. और मुझे कुछ जगह चाहिए। To be with who? और किसके साथ उस खाली जगह में हम जाएंगे? To listen to who? और किसको सुनेंगे वहाँ जाके? Just gotta work it out. मुझे बस थोड़ा इस पे काम करना है। I gotta put all the pieces together. मुझे सारे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना है। I gotta make sense of it. और इसका कुछ मतलब निकालना है। I gotta see, how this is my truth. मुझे ये देखना है कैसी ये मेरा सत्य है। Otherwise, how can I be expected to surrender? वरना कैसे मुझसे उम्मीद की जा सकती है मैं शरणागत कर पाऊँ? So we're playing all of these games. हम ये सब खेल खेल रहे हैं। We're not serious हम गंभीर नहीं हैं। because we're bodily attached. क्योंकि हम शरीर से आसक्त हैं। And Krishna knows it. और कृष्ण इस बात को जानते हैं। Huh? We're trying to hide the things that we're most attached to. What are you going to hide from Krishna? अब कृष्ण से क्या छुपा पाएंगे? That's why sometimes I laugh. Like sometimes you ever have this experience that you consciously say you like something क्या and you're attached to it, and the next thing you know, it's gone. Have you ever had that experience? क्या आपका जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है आपको कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपसे बहुत ज़्यादा आसक्त हो, आप कह रहे हो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ समय बाद आपके हाथ से वो चीज़ चली जाती है? आपका ऐसा अनुभव हुआ है? I had that. You just say, oh, I like that. This is convenient. This is, and all of a sudden it's like 1-2 days later it's gone, missing. मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे कुछ चीज़ें थी, हाँ इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा आसक्त था, और 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो चीज़ गायब हो गई। I remember one time we were cooking, right? And we used to have one thing that we used to have this spoon we're always using, And I'm looking, I'm like, where's the spoon, मुझे याद है जब मैं कुकिंग कर रहा था, कई बार रसोई कर रहा था, तो मेरे पास एक चम्मच था जिसमें And I'm going through all the drawers, I'm like, where's the spoon, अचानक से मैंने देखा वो चम्मच वहाँ पर It's नहीं such a है। nice spoon. मैं सब जगह ढूंढने लगा, इतना अच्छा I चम्मच like नहीं that है। spoon. कहाँ गया वो चम्मच? मुझे वो चम्मच चाहिए। I'm missing that spoon. उस चम्मच को याद कर रहा हूँ, कहाँ है वो? Then I'm asking, Ambarisha, did you see this spoon, और फिर मैं अम्बरीश से पूछ रहा हूँ, आपने देखा वो चम्मच कहाँ है? He said, does it look like this? तो उससे I क्या said, वो yeah. ऐसा दिखता है? तो वो कहते हैं हाँ Yeah, ऐसा exactly. दिखता है। हाँ, ऐसा ही Where's दिखता the है। spoon? मैंने कहा हाँ वो है कहाँ पे? He said, oh, I gave that to Sasha in Russia.
कहते वो मैंने जाके उस आशा को दे दिया रशिया में। It was like he took one of my kids away or something. ऐसा लगा जैसे कोई मेरा एक बच्चा लेके चला गया हो। You know, every time I use this plastic spoon after that, I'm like lamenting, where's my spoon, you know? और जब भी उस समय के बाद से मैं उस प्लास्टिक के चम्मच को इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस हमेशा सोच करता हूँ कहाँ गया वो मेरा चम्मच। It's like you lose your child, right? And then, you know, the government says, hey, can you take care of this kid? ऐसा आपके साथ Can भी you take care of this kid? You know, it's like, all right, you know, I'll try to help him, you know. It's not my kid, but I'll try to help him, you know. जैसे आप अपना बच्चा खो दिया और सरकार आपको कोई बच्चा ला के देती है, कहती है इसका ध्यान रखने का प्रयास करो, कहते हैं ठीक है इसमें मैं प्रयास करूँ ध्यान रखने का। It's nice, it's compassionate. ये अच्छा है, इसमें करुणा है थोड़ा। You know, the kid, like, he knows, like, I'm really not there. I don't belong to these people, you know. और बच्चा भी असल में जानता है कि ये लोग मैं इनका नहीं हूँ इन व्यक्तियों का। They're nice, they're trying to help me. ये अच्छे हैं, ये मेरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। The family's trying not to act like, you know, he's not really our kid, you know. और ये परिवार असल में नाटक ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा है कि असल में ये हम इनके हैं लेकिन असल में है नहीं। So anyway, we're very attached, you know. कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं सारी चीज़ों से। I remember one time someone gave me a picture of all of the kids. I had my children were there and some other children were standing on one couch, right? All the young kids, they took a snap. तो मुझे याद है मुझे एक तस्वीर दी गई जिसमें कि हमारे परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे कुछ बच्चे भी थे और एक सोफे पे बैठे थे सारे बच्चे उसमें। Then I was saying, oh, look, all the little kids are there in the picture, you know. मैंने कहा देखो कितने सारे छोटे बच्चे हैं इस तस्वीर में बैठे हुए हैं सारे। And then I'm going down the picture and I'm noticing as soon as I see my kids, I'm like, oh, there's my children, you know. और उस तस्वीर में जैसे ही मैंने देखा, मैं जाते गया तस्वीर में जैसे ही मैंने देखा मेरे बच्चे जहाँ पे हैं, मैंने कहा वो ये मेरा बच्चा है। And I remember thinking, why don't you have the same love and affection for all of those children? मुझे याद आया कि मैं फिर सोचने लगा कि क्यों मेरा प्रेम और स्नेह सारे बच्चों के प्रति एक Why जैसा just नहीं है? your children? क्यों बस अपने बच्चों के प्रति है? So it was a very good educational experience for me. तो मुझे बहुत ही अच्छा एक शिक्षा मिली उसे। So this bodily identification, bodily relations is very, very deep-rooted issue problem. तो ये शरीर और शरीर से संबंध और शरीर से जो परिचय करते हैं यह बहुत ही गहरी समस्या है आपकी। And it says that that attachment is the cause of every other sinful thought and activity that you come up with after that. और ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में किसी भी तरह का पापमय विचार या पापमय गतिविधि आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी आसक्ति की वजह से। Because we're doing for selfish purpose क्योंकि हम अपने मतलबी स्वार्थ के लिए करते or extended selfishness, हैं या विस्तृत स्वार्थ के लिए करते हैं out of love and affection. और उसको प्रेम और स्नेह का नाम But देते हैं। none of that has to do with Sanatana Dharma. None of that has to do with bhakti. और उसका सनातन धर्म भक्ति से कोई संबंध नहीं है। Unless you're on transcendental platform, you say that soul belongs to Krishna and I have some responsibility to turn them into Shuddha Bhakta. That's another story. और ये अलग बात है अगर आप दिव्य स्तर पे हैं और आप उनको भगवान के नित्य दास के रूप में देख पा रहे हैं उन आत्माओं को और उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं तो ये अलग बात है। But the most people, they're not thinking like that. लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। Is your mother here? क्या आपकी माँ Which है? one is your mother? आपकी माँ कहाँ है? Sitting down? Acha. I was very curious who is Ashok's mother. मैं बहुत जानने की जिज्ञासु था कि आशुतोष की माँ कौन है? Ashutosh. Father, mother. पिताजी और माता। So it's much easier to practice spiritual life if your mother and father, your family is trying to understand and practice spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करना बहुत आसान होता है जब आपके माता पिता भी इसको समझना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन क्या है कैसा है। Much easier. बहुत आसान होता है। Because they're also trying to how to understand something. क्योंकि वो भी कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं फिर। But you try to do that in a family that has no interest spiritually, how are you going to do that? How will you do it? और अगर आप उस परिवार में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं है तो फिर वहाँ आप इसको कैसे कर पाएंगे? Right? And you're saying, I have my duty to Krishna, right? To Guru Krishna. और फिर वो कहते हैं मेरा कुछ कर्तव्य है गुरु कृष्ण के I प्रति। have my Sanatana Dharma. मेरा सनातन धर्म है। And they're saying, no, you have your Dharma to your mother and your father. और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा धर्म अपने माता पिता के प्रति है।
You know, don't talk to me about serving God. You're going to serve me. अब भगवान की सेवा करने की बात मत करो, अभी तुम मेरी सेवा करोगे यहाँ। Because I raised you from the beginning, you see. क्योंकि मैंने तुमको बचपन से बड़ा किया है। And I fed you. मैंने तुमको खिलाया। And I worked so hard to provide for you. मैंने कड़ी मेहनत की तुमको सब कुछ दिलाने के लिए। You owe me. हम अब तुमको खरीद चुके हैं। Right? That's unconditional love and affection. तो क्या ये बिना नियम शर्तों के आधार पे प्रेम स्नेह है यहाँ पे? It's like the mafia coming, you know, when you owe some debt, you know. ऐसा है कोई माफिया आते हैं जब उनका आपको ये आपका कर्ज बाकी है उनसे। First they come, they're kind of nice. They're like, hey, you know, don't forget. पहले You वाले owe something, you know. शुरुआत में वो अच्छे से बात करते कहते हैं भूलना मत तुम्हारा कुछ कर्ज है हमारे ऊपर। Then if you're not giving, right, they start getting like more and more heavy, you know. फिर जब आप नहीं देते हैं तो और धीरे-धीरे वो सख्त होने लगते हैं, कड़े होने लगते हैं। You know, don't forget, you owe me. तो वो मुझे भूलना मत तुम्हारा कुछ कर्ज है मेरे ऊपर। And still you're neglecting. तब भी अगर हम उसको अनदेखा You करते know, हैं, they'll come with like, you know, AK-47s. They'll come after you, man. The mafia, they'll come after you. तो वो माफिया जो है बंदूकों के साथ AK-47 लेके आपके पीछे सकते हैं। And all of a sudden, like your sweet little mother, like is turning it. She looks like a gunda, you know. She's like basically like pulling you over on the side of the road and putting a gun to your head. Hey, you owe me, you know. और अचानक से देखेंगे आपकी जो प्यारी माँ है, वो असल में गुंडा बन चुकी हैं और आपको रोड के जैसे किनारे जो गुंडे लाके खड़े करते हैं साइड में, उस तरह से उन्होंने आपको खड़ा करके रखा है। You're just like, wow, mom, I never saw this side of you before, you know. कहते हैं माँ मैंने आपका ये रूप पहले नहीं देखा था। I thought you were like this sweet, innocent, you know, helpless lady, you know. मुझे तो था आप ऐसे प्यारी और बहुत ही नादान अबला स्त्री हैं। Love and affection, mom. You know, I know that mom, you know. मुझे वो माँ याद है प्रेम और स्नेह जो करती थी। I don't know the, you know, the threatening gun to the head mom. I didn't meet that mom before, you know. इस माँ से नहीं मिला था जो मुझे धमका के मेरे ऊपर बंदूक तान के मुझे कुछ कह रही है। I'm trying to digest that new darshan I'm getting of you, mother, you know. ये जो मुझे नया दर्शन मिला है अपनी माँ का, इसको मैं किसी तरह पचाने का प्रयास कर रहा हूँ। I don't want to think like that about my mother, you know. मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहता। But she's manifesting some demoniac qualities right now. I don't want to think like that, but looks like it, you know. वो कुछ आसुरी गुण प्रकट कर रही है, ऐसा सोचना नहीं चाहता लेकिन असल ऐसा दिखा रही है वो। You're not supposed to think like that about your mother, right? आपको अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? How can you think your mother's a demon? आप कैसे सोच सकते हैं आपकी माँ एक असुर है? But if she's not surrendered to Krishna, she's challenging Krishna. अगर आप वो कृष्ण को शरणागत नहीं है और कृष्ण को चुनौती दे रही हैं, She's blocking you from surrendering and serving Krishna. और वो रोक रही हैं आपको कृष्ण को शरणागत And she's selfishly demanding you serve her instead of Krishna. और वो अपने स्वार्थ से कह रही हैं कि आप उनकी मांग को पूरा करें, कृष्ण की मांग को पूरा करें। That means she's putting herself first before Krishna. इसका मतलब वो स्वयं को कृष्ण के आगे रख रही हैं। That means a demon. That's what demons do. इसका मतलब असुर है और असुर यही करते हैं। Sorry, mom. क्षमा कीजिए माँ। This is unpalatable. ये बहुत कड़वा सच है। It's socially unpalatable. सामाजिक रूप से बहुत कड़वा सच है। It's actually like forbidden to think and speak like this, isn't it, from social point of view? असल में ये बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही बुरा माना जाता है इस तरह से सोचना, बोलना। Right? How do you see your mother like this? आप कैसे अपनी माँ को इस तरह से? But eventually the swarup will come out. लेकिन धीरे-धीरे ये स्वरूप बाहर आएगा। Yeah. All of a sudden, this sweet little lady you're calling mom, you know, turns into, you know, like Putana, you know. अचानक से ये प्यारी माँ जो आप सोचते थे बहुत मधुर है, अचानक से वो जो है पूतना में तब्दील हो गई। Putana. Then you're like, you know, practically they have fangs, you know. और आप अक्सर उनको 3 नुकीले जबड़े देख पाएंगे। It's like, Mom, I never saw you with fangs before, you know what I mean? माँ मैंने कभी आपको नुकीले दांतों और Claws, fangs. It's like, well, I never got this darshan before, Mom, you know? आपके ये नुकीले नाखून और नुकीले दांत ये रूप मैंने पहले नहीं देखा। If we're not devotee, right, we're like, we're demon. अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम असुर हैं।
I don't care if you're a grandmother or mother or father or grandfather, right? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप माँ हैं, दादी हैं, पिता हैं, दादा हैं. We're challenging Krishna, we're not accepting his authority, we're not humbly serving him, then we're acting like a demon. अगर हम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम असुर के रूप में कार्य कर रहे हैं. That means very unattractive. इसका मतलब बहुत ही अनाकर्षित है ये रूप. Unattractive. बहुत अनाकर्षित है. I told you I have no idea where we're going in this conversation. मैं आपने पहले ही कहा था मुझे कोई विचार नहीं है हम इस वार्तालाप में कहाँ जाएंगे. Nothing is off limits. और कुछ भी Mothers, grandmothers, children, grandfathers, anybody, everybody. और किसी कोई सीमा नहीं है. बच्चे, माँ, दादा, दादी, कोई किसी की तरफ भी दिशा जा सकती है हमारी चर्चा. Because attachment too deep, too heavy, heavy. क्योंकि आसक्ति बहुत गहरी है, बहुत ही भारी है आसक्ति. I told you I got a great favor from my mother because one day I came back from school and all of my stuff was outside. मुझे मेरी माँ का मुझ पर बहुत एहसान है. एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब अपने स्कूल से वापस घर आया, मेरी माँ ने मेरा सारा सामान है घर से बाहर निकाल दिया. My bed, my almirah, everything, all my clothes. मेरा पलंग, मेरा अलमीरा, मेरे सारे कपड़े घर से बाहर निकाल दिए. And I came from the school. I said, why is all of my things in the front yard of the house, you know? मैं स्कूल से वापस आया. मैं पूछा कि मेरा सारा सामान घर के बाहर के आंगन में क्यों रख दिया गया है. I'm just walking up and I'm like, hey, you know, that's my bed, you know, that's my almirah. What's it doing on the grass in the front of the house, you know? मैं चल के वापस जा रहा था. मैंने देखा अचानक से, ओ ये तो मेरा पलंग है और ये मेरा आईना है. ये घास पे पड़ा हुआ क्या कर रहा है. You know, boxes. मेरा सूटकेस, मेरा सारा बक्सा, बहुत सारा With my name on it. जिसपे मेरा नाम भी लिखा है, सब बाहर I mean, hey, it's all my stuff. ये सब तो मेरा सामान है. I came in, my mother's sitting there waiting for me, you know? जब मैं अंदर गया, मेरी This माँ is true story. इंतजार कर रही है. असल कहानी है मेरी. And I said, Mother, why is all of my things outside like this? मैंने कहा, माँ मेरा सारा सामान घर से बाहर ऐसे क्यों रखा है. What happened? क्या हुआ क्या. She said, well, you want to be independent, so I'm helping you to just go live your life, figure it out. मेरी माँ ने कहा, ठीक है तुम आज़ादी से रहना चाहते थे, आज़ादी से तो मैंने अब तुमको मौका दे दिया. आप बाहर जाओ, आज़ादी से जितना रहना है रहो. You don't want to follow all the rules and regulations in the family, in the house? अगर आप घर के नियम कानूनों का पालन नहीं करना चाहते हैं, परिवार के नियम कानूनों का, And all our brothers and sisters are there and you want to just act independently like this and not to follow anything? और आपके छोटे भाई बहन हैं यहाँ पे और आप इस तरह से काम करेंगे और आज़ादी से अपनी मनमर्जी से जिएंगे. And I've asked you many times to adjust your lifestyle, let's say. और मैंने तुमको कई बार कहा कि अपना चाल चलन ठीक करो थोड़ा. You're not accepting? और तुमने इसको स्वीकार नहीं किया. So go figure it out. तो आप जाओ, खुद से पता लगाओ क्या करना है. Get your lesson. अपना पाठ सीखो. That was a great blessing, wasn't it? और मुझे बहुत अच्छा पाठ सीखने को मिला वहाँ पे. Right? You're trying to figure out how to escape. आप पता लगाने का प्रयास करो कैसे बाहर निकलना है. Even you're just like in the room, just like, okay, what if I crawl out the window? बस कमरे में बैठ के सोचते हैं कैसा होगा मैं खिड़की से जो है घुस के बाहर निकल जाऊँ घर से. How many stories are we here, you know? हमारे घर कितने मंजिला का है. You know, if I got the sheets and tied it together, you know, would it be long enough to let me out of the house? क्या मैं अगर सारे चादरों को बांध दूँ तो क्या मैं अपने खिड़की से बाहर घर से निकल पाऊँगा. Are you thinking like this? तो क्या आप ऐसा सोचते हैं. My mother cooking for me tonight. मेरी माँ आज रात मेरे लिए खाना बनाने वाली How है. can I leave my mother? कैसे मैं अपनी माँ को छोड़ के जा सकता हूँ. She'll cry. वो रोने लगेगी. Her heart will break. उनका दिल टूट जाएगा. Sometimes the mother, we see they come, they roll on the ground in front of the temple, you know, seriously. कई बार मैंने देखा है कि कुछ माताएं मंदिर में आती है और मंदिर में नाटी मारने लगती They है. do a whole drama, you know. पूरा नाटक करना शुरू कर दिया. And then they're acting like they're having a heart attack, you know. आखिर वो ऐसा नाटक करने लगती है जैसे उनको दिल का दौरा होता है. It's like a Hollywood production, you know. ऐसा लगता है हॉलीवुड के कोई. Sometimes they're putting on makeup, they get lighting, it's unbelievable, you know. ऐसा लगता है कि कुछ शो चल रहा है यहाँ पे, लोगों ने चेहरे पे मेकअप करके कुछ लाइट्स लगाए और वहाँ पे They get some crisis actors to come and join
in the set, you know. ऐसा है कि कोई खतरनाक परिस्थिति का जो है उनको कार्य करके दिखाना है, ड्रामा करके, एक्ट करके, कलाकारी करके दिखाना है। And then you come out, you're just chanting, you know, and your mother's rolling on the ground, you know, having a heart attack, you know. और आप जो है जब करते बस बाहर आया देख रहे हैं माँ जो है रो रही है और गुलाटी मार रही है और दिल का दौरा आने का नाटक कर रही है। I remember when I joined the temple, my mother came to the temple. मुझे याद है जब मैं मंदिर से जुड़ गया था तो मेरी माँ मंदिर पहुँच गई। Because my mother was very attached to me. क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा आसक्त। And she challenged the Maharaja, you know, how you're taking my son like this, you know. उन्होंने महाराज को जाके चुनौती दी, कहा कि मेरे बच्चे को कैसे लेकर चले गए। You know, this is not good. This is not acceptable. ये अच्छा नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। And the Maharaj said, you know, I don't know if this is good, but he said, you know, Mrs. So-and-so, he doesn't belong to you anymore. Now he belongs to Krishna. That's how he spoke to my mother. My mother, like really strong lady, you know. और पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि उस महाराज ने मेरी माँ को उत्तर दिया कि आपकी माता जी फलना है फलना, आपका बेटा अब आपका नहीं रहा, अब वो कृष्णा का हो चुका है। And my mother was big too, you know. और मेरी माँ भी बहुत तगड़ी, बहुत मजबूत थी। So, you know, I thought she'd start throwing a few, you know, haymakers, you know. मुझे लगा वो कुर्सियाँ मार दे महाराज को मेरी माँ। And that Maharaj was like a little skinny, you know. और महाराज थोड़े पतले दुबले थे। I was like praying the Lord Nrsimhadev, you know, please protect Maharaj, you know. मैं नरसिंहदेव से Because I प्रार्थना know करता this lady, you know. Please protect Maharaj, you know. मैं नरसिंहदेव से प्रार्थना करता कि महाराज की रक्षा कीजिए, मुझे पता है ये महिला कैसी है, उनका क्या हाल कर सकती है। I hope he chanted nicely this morning, you know. मुझे उम्मीद है सुबह अच्छे से जप किया होगा महाराज ने। Because you just aggravated this lady, you know. अभी इन्होंने इस महिला को भड़का दिया है। You stole her son and now you're aggravating her on top of it, you know. पहले तो उनको बच्चे को चुरा लिया, उनको थोड़ा भड़का रहे आप इस महिला को। So they say like a mama bear, you know, the mama bear comes out, you know. कहते हैं कि भालू माँ जो है वो बाहर आ गई है, भालू आ गया माँ का बाहर। I don't know why I'm talking about this. मुझे पता नहीं मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। Peter, how you doing, man? पीटर आप कैसे हैं? You look like a lost soul back there. ऐसा लगता है कि आप खोए हुए आत्मा हैं पीछे। You don't have a mama bear taking care of you, Peter? कोई आपकी माँ भालू माँ नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखती। Oh. He has the cows. इनके पास गायें हैं, गाय माता। He has the love and affection of Gomata. इनको प्रेम और स्नेह मिल रहा है गौ माता का। But what happens is because these attachment, bodily relations are so deep, if you don't start to address it, then how will you even begin to understand it to try to get out of it? तो लेकिन ये शरीर और I think that's why this is coming out like that. क्योंकि ये शरीर और परिवार से आसक्ति इतनी ज़्यादा है, इतनी गहरी है, अगर हम इसको ध्यान रखना शुरू नहीं करेंगे और इससे कैसे हम बाहर निकले, इसे सोचने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम इसके आगे तक कैसे पहुंच सकते हैं? Adam is so attached to his mother. आदम अपनी माँ से बहुत आसक्त था। He's like a big baby, man. ये कोई बड़ा बच्चा है। He's a big baby. ये बहुत बड़ा He बच्चा acts है। like he's a Nazi world order, Hitler's the god, you know, but he's totally attached to his mother, you know. ये नाटक कर रहा Honest to है, God, true story. ये नाटक कर रहा है, दिखाने का बहुत बड़ा आंदोलनकारी है, हिटलर इनके भगवान है, लेकिन अपने माँ से बहुत ज़्यादा आसक्त है, ये बड़ा बच्चा जैसा। Right, he's marching with Hitler, then he's like, Mom, can I have some ice cream? ये हिटलर के साथ परेड करते हैं अपने दिमाग में और फिर माँ को कहते He हैं just wants to sit on the couch and eat ice cream मुझे आइसक्रीम from his mother, you know, vanilla, अपनी माँ से कहते हैं मुझे वनीला कुछ खाने को मिलेगा, some of his favorites. कुछ पसंदीदा ये सब। Very strong attachment. बहुत ही मजबूत आसक्ति है इनकी। Dave, who are you attached to ये वो आप किससे आसक्त हैं? besides your body? अपने शरीर के अलावा। You're supposed to say that, man. आपको तो ये कहना ही पड़ेगा। Right? If the person's wife is sitting there, right, and you say, who are you attached to, right? My wife. Of course. Who do you think? If I don't say her, I can't even go home tonight. अगर आप अपनी पति के साथ कमरे में बैठे हैं और आपको पूछ रहे हैं आप किससे आसक्त हैं, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स अवश्य मैं अपनी पत्नी से आसक्त बोल रहा हूँ, घर में आप वापस नहीं जा पाऊंगा। I'm starving. I want to eat something tonight, you know?
मुझे भूख लगी आज रात मुझे कुछ खाना खाना है। I don't say her name. I'm finished, you know. अगर इनका नाम मैंने नहीं लिया मैं तो खत्म हो जाऊंगा। It's like this, right? ऐसा। Very good. Very smart. बहुत बुद्धिमान है। Any questions? कोई सवाल है? Points? Anything you want to talk about कोई बात while we're कोई here? पूछना चाहता है? Did I offend everybody enough? क्या किसी सबके प्रति मैंने काफी Did I offend अपराध कर दिया? what is it? The mothers of the globe? Did I offend them enough? क्या मैं धरती में मौजूद सारी माओं के प्रति कुछ अपराध कर दिया? I was thinking mothers of America are going to like come after me. Mothers of India are going to come after me. मुझे लगा भारत की सारी माएं अब मेरे पीछे आने वाली हैं। They're going to get together. वो सब एक साथ एकजुट होने वाली है। Yeah, forget about the drama with the tears on the sidewalk, you know. अब आंसू वाला नाटक छोड़ दो, दूसरे आने वाले हैं। Right? They save a little bit of money, you know what I mean? उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी बचा के रखे हैं। They're very clever. They'll hire somebody. बहुत चला के किसी को नियुक्त करेंगे। Sometimes even they poison the kid. कभी-कभी वो बच्चे को जहर भी देते हैं। Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? They'll threaten the child. बच्चे को धमकाने के लिए। This is like a nightmare, right? This whole, well, it's Halloween, right? So this is like, it's like a story about the demon mother, like Putana, you know? ये आज हमारी बातचीत With ऐसा the लग रहा है। teeth and the fangs, right? It's like a perfect timing, you know? ये आज का हमारा बातचीत ऐसा लग रहा है जैसे कोई रात का बुरा सपना हो। हम उन माओं के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है जबड़े दांत पीले दांत निकले हो, नाखून निकले हो, पूतना जैसी माओं के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है आज का। Right? They're just like standing there with the coat on, sorry, right? And then turn around, they're like, ah, it's like your worst nightmare, you know? वो अपना साड़ी घूंघट डाल के खड़ी है, फिर अचानक से वो तब्दील हो जाती है, अचानक से कोई बड़ी चुड़ैल के जैसी, तो सबसे बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा बुरा सपना जैसा आपके लिए। And you're trying to be cool. It's like, you know, hi mom, you know, और आप जो है शांत are you all right? माँ से पूछे, माँ आप ठीक है तो? Did you eat something tonight? क्या आपने रात में कुछ खा लिया था? Oh, Krishna. Anyway, I don't want to say too much because I don't want to, you know, offend anybody. मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता वरना किसी को बुरा मान लेगा मेरी बातों का। So who are we trying to please? तो हम किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? Who are we worrying about displeasing? हम किसके बारे में इतना चिंता कर रहे हैं? किसको हम नाखुश कर देंगे? Sanatan, question? कोई सवाल है? What's your question? आपका क्या सवाल है? You're always trying to please your mother, right? आप हमेशा अपनी माँ को खुश करने का प्रयास करते हैं। Isn't she like always threatening you, crying, trying every tactic in the book? क्या वो हमेशा आपको धमकाने का हर वो प्रयास करने का प्रयास नहीं करती है जो उससे किताबों में पढ़कर आती हैं वो? Sometimes crying, sometimes screaming, कभी रोती हैं, कभी चिल्लाती हैं, sometimes threatening, कभी धमकाती हैं, sometimes heart attack, कभी कभी दिल का दौरा का नाटक करती हैं, sometimes she send the father after you. कभी कभी अपने पिता को इनके पीछे भेजती हैं, Sometimes they say, okay, we will not give you any inheritance, और कभी कभी वो कहते हैं हम अपनी कोई संपत्ति नहीं देंगे आपको, no money, कुछ पैसा नहीं देंगे, no property. कोई संपत्ति नहीं देंगे आपको। They try everything. वो हर कुछ प्रयास करते हैं इनके पीछे। Does that sound like devotee will do like that? क्या आपको लगता है कोई भक्त किसी के साथ ऐसा करेगा? If you're a devotee, you say, oh, Krishna wants my child. He wants the child to be devoted. He wants them to serve Krishna. अगर कोई भक्त है तो वो सोचे कि हाँ कृष्णा मेरे बच्चे को चाहते हैं कि वो भी कृष्णा का भक्त बने और उनका सेवा करे। In ancient time, Vedic time, if you had a child that was devotee, that you were like exalted in the society. और प्राचीन समय में वैदिक सभ्यता के समय में अगर किसी का कोई बच्चा हो और वो भगवान का भक्त बनने का प्रयास करे तो असल में वो बहुत ही पूजनीय होता है। Even in other religion, Jewish religion or Irish, like Irish family, if you had one of your sons was a priest
Oh my God, this is like respectable, isn't it? और यहाँ तक कि जूइश परिवार के जो धर्म के लोग हैं या फिर आयरिश जो धर्म के लोग हैं, उनके यहाँ पे अगर कोई पुजारी या पादरी बनने का प्रयास करता है तो उनको वहाँ बहुत पूजनीय माना जाता है। That means you gave birth to a religious child like that. This is very respectable. तो उनको बहुत आदरणीय माना जाता है कि उन्होंने किसी तरह बहुत धार्मिक पुत्र को जन्म दिया अपने घर में। In old days, it was like this. और प्राचीन पहले के समय में इस तरह माना जाता If है you're not pious, how you can have a child like that? कि अगर आपके पास कोई पुण्य कर नहीं है तो आप इस तरह का पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते। Nowadays, they go to your family and say, where did you go wrong? और आजकल जब ऐसा होता है तो लोग परिवार के लोगों को पूछते हैं आपने क्या गलती करी है, How did you fail your children? कैसे आपके बच्चा असफल हो गया, What mistake must you have done that they just went crazy? आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी कि देखे वो आज पागल हो गए। And then everyone's lamenting, right? And the mother's like, well, I don't know, where did I go wrong, और फिर सब लोग सो करते हैं या मारने लगती हैं, कहती पता नहीं हमने क्या गलती कर दी, What didn't I provide for them? क्या चीजें मैंने कमी कर दी उनके लिए, What shortage was there, emotionally, physically? शारीरिक रूप से। This is Kali Yuga, ये है कलियुग। Does anyone have a burning question for me क्या while we're किसी को still चलता here? हुआ सवाल है? Question? Anybody? कोई सवाल Peter, है? you have a question? पीटर आपका कोई सवाल है? Get it all figured out? आपने सब कुछ पता लगा लिया है? Yeah. Oh, Sanatana, I forgot about you. सुना आपने, मैं आपके बारे में भूल गया। So? Srila Gurudev, in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says that this Ashtanga Yoga is for those personalities who are very attached bodily platform. The sun what? Ashtanga Yoga is for those people who are very What is it? Ashtanga Yoga, it's for people who are very much bodily attached. You want to do Ashtanga Yoga? आप अष्टांग योग करना चाहते हैं? Do you think you can do it? आप सोचते हैं आप कर पाएंगे अष्टांग योग? No sleeping, no eating, न सोना न खाना, no sweet rice, कोई खीर नहीं, no gulab jamun. गुलाब जामुन भी नहीं मिलेगा। Can you do it? आप कर पाएंगे? Only eat some air and some leaves. कुछ हवा और कुछ पत्ते खाने होंगे। You can just eat air. क्या आप हवा खा सकते हैं? So what are you going to do now? You can't do Ashtanga Yoga. अब आप क्या करेंगे? आप अष्टांग योग कर नहीं सकते। Now what's the plan? अब क्या आपका योजना है? Hatha Yoga? हड्डी योग करेंगे? So? What He happened? got his answer. Who? Sanatan, he understands the answer. You got the answer? आपको उत्तर मिल गया आपका? But I didn't understand the question. आपका सवाल नहीं समझा है। I got my answer. I'm like, I don't even know what the question was. मुझे अपना उत्तर मिल गया। मैं कह रहा हूँ मुझे अब तक समझ भी नहीं आपका सवाल क्या है। How can he get the answer without me understanding the question? इनको अपना उत्तर कैसे मिल गया जब तक इनका सवाल भी नहीं समझा है? That doesn't sound logical. सुनने में तर्क नहीं लगा इसमें कुछ। Isn't it supposed to be other way around? कैसा ये उसका विपरीत नहीं होना चाहिए। So let's hear the question just out of curiosity, तो चलिए फिर इनका सवाल सुनते हैं हमारी जिज्ञासा That के would be लिए। very interesting. बहुत रुचिकर होगा सुनने में। Srila Prabhupada says that for people in Kali Yuga, Bhakti Yoga is only very easily applicable. And then Prabhupada says that this Ashtanga Yoga is for those people who are very much attached on bodily platform. So I had this doubt that, but we are also very attached on bodily platform. So how is it that it's not? This medicine is Mahamanta. This medicine is the best medicine. तो प्रभु का सवाल है कि श्री प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं कि जो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं उनके लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया बताई गई है। और प्रभुपाद ने ये भी कहा है तात्पर्य में कि भक्ति योग प्रक्रिया कलियुग के जीवों के लिए योग्य है, सही है।
और तो फिर मेरा ये संदेह है कि फिर हम इस अष्टांग योग प्रक्रिया को क्यों नहीं करते। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ये महाऔषधि है। So sit, hear Hari-katha, krishna-katha, chant Hare Krishna and take prasad. Bas. तो बैठिए, हरि कथा कृष्ण का श्रवण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, प्रसाद लीजिए। ये प्रक्रिया है, Very simple. बहुत सरल। You don't have to be a big scholar. बहुत बड़ा विद्वान होने की You don't जरूरत have to नहीं है। learn Ashtanga yoga. आपको अष्टांग योग सीखने की जरूरत नहीं है। You don't have to become tyagi, आपको त्यागी बनने की sannyasi. जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। Just come, hear about Krishna. आइए कृष्ण के बारे में श्रवण कीजिए, Try to attentively hear, try to understand. ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का Chant प्रयास Hare कीजिए। Krishna, Mahamantra. हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, Talk about Krishna, कृष्ण think के बारे about में बात Krishna. कीजिए, कृष्ण के बारे में सोचिए, And take Jagannath Prasad, Krishna Prasad. जगन्नाथ प्रसाद कृष्ण प्रसाद लीजिए। How more simple do we want it? इससे ज़्यादा हम सरल क्या चाहते हैं? So the simplest process, but gives you the highest reward, the highest possibility. तो सबसे सरल प्रक्रिया लेकिन आपको सबसे ऊंचा फल देगा, सबसे ऊंचा फायदा दे सकता है। And what's so unfortunate, तो इतने दुर्भाग्य हैं, they were saying, oh, it's too difficult, कहते हैं बहुत मुश्किल है ये, it's complicated, बहुत जटिल है, not so easy. ये इतना आसान नहीं है। So we want an easygoing life, तो हम आसानी से चलने वाला जीवन चाहते हैं and automatically we're going to achieve the highest spiritual, benediction और हम सोचते हैं हम अपने आप ही सबसे ऊंचा आध्यात्मिक प्राप्ति कर सकते हैं without doing anything, without sacrificing anything. बिना कुछ त्याग किए बिना। To come here regularly, then you're making a priority and you're sacrificing your time and your energy and your attention. तो आप यहाँ पर निरंतर आते रहिए, तो आप अपना समय और अपना ध्यान, अपना ऊर्जा यहाँ पे त्याग करके यहाँ पर आ रहे हैं, संग को प्राप्त करें, इसको प्राथमिकता करें अपनी, And also resources to be able to come. और सारी उन संपदाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप यहाँ तक पहुँच सकें। It's the sacrifices for the purpose of hearing and chanting तो आप उस त्याग को कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं इस श्रवण कीर्तन को करने के लिए, and taking prasadam. और प्रसाद दे रहे हैं। Without prasadam, none of us would be here. बिना प्रसाद के हमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होता। We wouldn't have come हम ना तो यहाँ आते and we wouldn't have stayed और ना ही यहाँ रुकते if it wasn't for Krishna prasad. अगर ये कृष्ण प्रसाद नहीं होता। Isn't it? ऐसा है या नहीं? Sometimes I was joking that this halava, it made me devotee. कभी कभी हम मजाक करते हैं कि ये हलवा ने मुझे भक्त बना दिया। Yeah, peanut butter, carob halava ये made बदाम- me a devotee. ये बादाम के जो मक्खन से बनता हुआ जो हलवा है, ये इसने मुझे भक्त बना दिया। It doesn't mean that you have to make me peanut butter, carob halava. That's not why I'm saying. I'm just telling. इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन से जो है पीनट बटर हलवा बनाना शुरू कर दें। मैं बस Once ये I बता- tasted that, then I said, okay, I'm a believer now, जब मैंने एक बार उसका स्वाद Unbelievable. लिया, तब जब मैंने एक बार उसको स्वाद दिया, तब मुझे पूरा विश्वास आ गया इसमें। It's mercy, right? Prasad means mercy. तो ये कृपा है, प्रसाद ही कृपा है। So association means we can hear and chant together. संघ का मतलब है कि हम अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकें। Without association, there's no hearing and chanting together. बिना संघ के श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते हम एक So साथ। association is required to hear and chant and to take nice prasadam. तो संघ की आवश्यकता है अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकें और अच्छे से हम प्रसाद ले सकें। And that is the treatment program. और यही है उपचार का कार्यक्रम। But Maya will always say, oh, it's associating devotees so complicated, और माया हमेशा कहेगी ये भक्तों का संग बहुत जटिल है and I don't agree with everybody. और सभी लोगों के साथ मैं They सहमत don't नहीं understand me. हूँ, मुझे समझते नहीं है, I don't have any friends. मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ। Right? Some sad story we're trying to convince ourselves about. इसी तरह का दुख भरी कहानी हम खुद को सुना के अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं Not a priority. और ये हम प्राथमिकता नहीं दे संघ को। I need some space. हमें कुछ अलग जगह चाहिए, I need some facility, better facilities. मुझे बेहतर सुविधाएं चाहिए, I need a better view. मुझे बेहतर दृश्य चाहिए। But without association, there's not proper hearing and chanting and not proper prasada. तो बिना संघ के ना सही से श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, ना सही से हम प्रसाद ले सकते हैं। That means pulling out of treatment program.
इसका मतलब हम इस उपचार के कार्यक्रम से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। So, okay? ठीक है। You see, you read the Shastra, and the Shastra says, oh, Ashtanga Yoga is for people who are too much bodily attached. So then you start trying to do Ashtanga Yoga. आप देखिए, जब आप शास्त्र इस तरह से पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, उनको अष्टांग योग करना चाहिए, और आप उसको करने के बाद अष्टांग योग करने का प्रक्रिया शुरू होने लगते हैं। Because it says in the Shastra. क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है करने को। Right? And of course, we don't read the other line that that's only possible in Satya Yuga. और अवश्य हम We missed that part of the paragraph, you know. और उसी पैराग्राफ के अगले वाक्य में ये भी लिखा है कि ये इस सतयुग में सिर्फ योग्य था, इस युग में इसको नहीं किया जा सकता। हम उसको पढ़ना भूल जाते हैं। Small detail. एक छोटा सा और जानकारी हम भूल जाते हैं। Can only be possibly perfected in Satya Yuga. Oh, I left that part of the paragraph out. You know? और ये बस संभव हो सकता है केवल सतयुग में। वो ये चीज़ मैं पढ़ना ही भूल गया। Yeah, I read it with my own eyes. It says if you're too attached to your family life, bodily consciousness, then you must do Ashtanga Yoga. ओ हाँ, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, पढ़ा है कि अगर आप अपने परिवार से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं तो आपको अष्टांग योग करना चाहिए। People are in the class, they're trying to sneak in some pranayama, you know, just in case the bhakti doesn't work, you know. They're like acting like they have like a cold, you know. They're just trying to suck some prana, you know. और कुछ लोग जो है फिर क्लास में बैठ के कुछ न कुछ प्राणायाम, कुछ न कुछ योगा आसन करने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हो सकता है भक्ति काम ना है तो ये कम से कम काम कर तो नाटक करेंगे, मुझे ठंड लगी, नाक दबाने का प्रयास करेंगे क्लास में, और हवा कुछ प्राण टालने का, कुछ खींचने का प्रयास करेंगे। We cannot cheat the system. आप व्यवस्था को ठग नहीं सकते। So all the instructions are there for everybody on every platform. So which instructions are meant for you? तो ये सारे निर्देश अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए है। तो आपके लिए कौन सा निर्देश एप्लीकेबल लागू होगा? Which one is applied for you? आपके लिए कौन सा What is निर्देश Krishna? लागू If there's होगा? 1,000 services, right? Which one does Krishna want you to do? तो उसमें से हजारों निर्देशों में से कृष्ण आपसे कौन सा निर्देश चाहते हैं? I remember when we were preaching to the Ritviks. मुझे याद है जब मैं इस तरह के ऋतु लोगों को प्रचार कर रहा था। I went to the Ukraine to preach to the Ritviks. मैं यूक्रेन देश में गया ऋतु लोगों को प्रचार करने के लिए। And then I'm just asking them like some questions, you know. और फिर मैंने कुछ सवाल पूछना शुरू किया। So you're saying Prabhupada is your only guru. मैंने कहा आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद सिर्फ आपके गुरु हैं। So I said, can you hear Prabhupada? तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रभुपाद को सुन सकते Can हैं? you hear, just like Krishna, can you hear Krishna? Can you hear Prabhupada telling you what to do? जैसे कृष्णा प्रभुपाद को क्या आप सीधे से सुन पाते हैं कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं? You can hear his instruction? क्या आप उनके निर्देश को सुन सकते हैं? And they said, well, we just go to Prabhupada's books. फिर वो कहते नहीं, हम प्रभुपाद की किताबों में जाते हैं। So then you're just like scouring through the books to look for some instruction? तो क्या आप किताब में पूरा टटोलते रहते हैं कि कौन सा निर्देश आपको चाहिए? And they say, yes, it's Prabhupada's books. तो कहते हैं हाँ, ये For the प्रभुपाद की next किताब है। 10,000 years. उन्होंने ये 10,000 साल तक पहले ये निर्देश दिया है। Then I said, well, how do you know out of all of those unlimited instructions, which one does Prabhupada want you to do? लेकिन आप ये कैसे समझ पाए इतने सारे असीमित निर्देशों के अंदर प्रभुपाद आपसे कौन सा निर्देश का पालन करवाना चाहते हैं? And then the lady, she says, I just asked my husband. और उस महिला ने कहा मैं अपने पति से जाके पूछ लेती हूँ। Then you're accepting your husband as a guru. इसका मतलब आपने अपने पति को अपने गुरु के रूप में How do you say Prabhupada, everything Prabhupada, 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 and then you can't hear Prabhupada, so now you just accept your husband as a guru. तो कैसे आप बस प्रभुपाद कहते रहेंगे और अंत में आप अपने पति को गुरु के रूप में स्वीकार कर ले रहे हैं? So how do you understand and apply the instructions? तो कैसे आप उन निर्देशों को समझेंगे और कैसे आप उनको लागू कर पाएंगे? The guru's required. इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। I'm not making this up. मैंने इसका निर्माण नहीं किया है।
Even Krishna, Mahaprabhu, they all accept the Guru. यहाँ तक कि कृष्णा महाप्रभु वो भी गुरु स्वीकार And they're telling you, everyone has to accept the Guru. और वो बता रहे हैं सभी को गुरु स्वीकार करना And Krishna telling you, I'll not tell you directly. और कृष्ण बता रहे हैं मैं सीधे I'll सीधे tell you आपको through the बताऊंगा। Guru. मैं आपको गुरु के माध्यम से बताऊंगा। That's Krishna's system, parampara system. ये कृष्ण की प्रक्रिया है, परंपरा की व्यवस्था है ये। I'm not doing this like as a job presentation, like I'm looking for a job, you know. I need to be, I'm trying to be a guru, I'm looking for some disciples, you know. मैं यहाँ पे कुछ नौकरी ढूंढने की तलाश में ऐसा प्रस्तुति देने के नहीं आया कि वो मैं गुरु हूँ, मैं कुछ शिष्य की तलाश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया। I'm available. जो मैं उपलब्ध हूँ नौकरी को। What do you think this is? I'm available, just in case. ओ मैं उपलब्ध यहाँ पे अगर Anybody's looking चाहिए for तो a अगर कोई guru. गुरु ढूंढ रहा है तो मैं उपलब्ध हूँ। You think I want this type of follower? आपको लगता है मैं इस तरह के मेरे अनुयायी मैं इस तरह के अनुयायी चाहता हूँ अपने लिए? Isn't it funny, bona fide guru doesn't even want to be a guru. ऐसा कहा जाता है कि प्रमाणिक गुरु बनना भी नहीं चाहते हैं। He's being asked to do it. उनको गुरु बनने के लिए कहा जाता है। Because mostly it's thankless task. ज़्यादातर इसमें जो है Heavy burden. बहुत भारी भरकम बोझ उठाना पड़ता है इस कार्य के लिए। The guru has to absorb everyone's sinful reactions. और गुरु के सभी के पाप कर्म के फलों को अपने ऊपर लेना होता है शिष्यों To help purify all sinful reactions, the guru has to digest them. उन सारे पाप कर्म को नष्ट करने के लिए शुद्ध करने के लिए गुरु को उसको अपने ऊपर लेकर उसको पहचानना पड़ता है। Why do you think you're feeling better? क्यों आपको लगता है कि आप बेहतर महसूस करने लगते हैं? Where do you think all the sinful reactions are going, that you're feeling more healthy and more happy? आपको क्या लगता है आपके सारे पाप कर्म के फल कहाँ जा रहे हैं जिसकी वजह से आप और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा खुशी महसूस कर पा रहे That's why I'm trying to send most of you to Adam. हैं? इसलिए मैं आप सारे लोगों को जो है एडम के पास भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। Because then I see all the sinful reactions, like a Himalayan mountains coming at me, you know, and I'm like, okay, go preach, go talk to Adam, you know. क्योंकि मैं देखता हूँ इन सारे लोगों के पाप कर्म हिमालय पर्वत जैसे हैं, जब मेरे तरफ आ रहे होते हैं तो मैं सबको कहता हूँ इसको एडम की तरफ भेजने का प्रयास करता You're हूँ। like the perfect candidate who should talk to Adam, you know. आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं कि जो आप एडम के साथ बात कर सकते हैं। Yeah. You dump all of your sinful reactions on him. आप अपने सारे पाप कर्म फल इनके ऊपर डाल दीजिए। And then once he dies, you know, then you can come back, you know what I mean? जब वो मर जाएगा तब आप लोग मेरे पास आ जाओ। Just sharing the love, you know. I don't know any other way to explain it, you know. बस मैं अपना प्रेम बांट रहा हूँ और पता नहीं मैं किस तरीके से बताऊँ। Just that's what we do. ये हम करते हैं। That's just what we do. यही सब हम करते हैं। So anything else? कोई और? Yeah. Gurudev. Oh, Shutosh. You guys are like, you never saw like a microphone before, you know? They're like, you know, like cavemen, you know, they just like come across something and they're just like, you know, they're like eating it or like, what do you do with it? You know what I mean? ये दोनों ऐसे जैसे जो जंगल में रहने वाले आदि मानव होते हैं उनको कुछ ऐसा चीज मिल जाता है उनको पता नहीं चलता है इसका क्या करना है कभी चबा रहे होते हैं कभी सर Can you crack nuts with this thing, you know? क्या इससे मूंगफली तोड़ना होता है क्या करना होता है It's heavy enough, you know? भारी है काफी भारी है टूट जाएगा इससे And they're supposed to be like technology gurus, you know what I mean? और ये टेक्नोलॉजी के गुरु में माने जाते हैं This is unbelievable, ये अविश्वसनीय है right? We got to get them a job with Gopal, you know what I mean? गोपाल के साथ काम पे लगाना चाहिए Scare Pakistan, you know? ताकि पाकिस्तान को थोड़ा खौफ आ जाए These guys are like the buttons there and they're like, you know, what's this red button, you know? ये लोग देखेंगे लाल बटन है देखेंगे ये लाल बटन करता क्या है और उसको मारने लगे And then the missiles are flying, they're like, you know, this is Ram Vijay, you know, Ram Vijay. और फिर वहां से मिसाइल उड़ने लगे फिर कहेंगे वो राम विजय आ गया राम विजय का दिन आ गया
Wow, that's humbling, isn't it? बहुत विनम्र How'd you करना get the है। mercy? You must have been praying. आप कितना कृपा कैसे मिला? आप वैसे कुछ प्रार्थना कर रहे He's हो? like, why am I not getting any mercy? You रोज know? बोल रहा था मुझे कृपा क्यों नहीं मिल रहा है? I remember David, one time he came to me, he's like, why are you never chastising me? You know? एक बार मुझे याद है कि मेरे पास आए उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे क्यों डांटे कभी क्यों नहीं? I feel like you're cheating me or something. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे ठग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। He says, if the Guru chastises you, mean he's giving you some mercy. Why are you not chastising me? ऐसे कहते हैं जो गुरु हमें डांटे हैं तो हमें कुछ कृपा मिल रहा होता है, तो आप मुझे डांटते क्यों नहीं कभी? And I said, because you're trying your best, you're doing all right. Why I should chastise you? क्योंकि आप अपने श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको क्यों डांटूंगा? And he was thinking, no, this isn't right. Guru, they're cheating me, you know. फिर वो कहते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, गुरुदेव मुझे ठग रहे हैं। So he kept demanding, you know, that you have to chastise me, you know. तो इन्होंने ये मांग करते रहे, नहीं मुझे डांटी है आप। And I wasn't feeling it, you know, in that moment. So it was very difficult to chastise him, you know. और मुझे उस क्षण में महसूस नहीं हो रहा था, तो मैं उस वक्त वो कर नहीं पा रहा था, इनको डांट नहीं पा रहा था। I thought it would be like artificial, you मुझे know. लगा ये थोड़ा बनावटी होगा डांटना। Now I'm chastising you, you know. और अब मैं आपको डांट रहा हूँ। So I thought, okay, if that's your desire, Krishna will make some arrangement and you'll get your desire fulfilled, you know. और मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करेगा। Then it will be natural. तो फिर स्वाभाविक रूप से होगा। Then the next day, और फिर अगले he दिन comes in to serve the prasad. ये प्रसाद देने के He लिए has a आया। big bowl of hot rice with the ghee on it. इनके पास एक बड़ा सा बोल था जिसमें गरम गरम चावल और उसके अंदर गरम घी And डाला he था। little bit chips, और ये and थोड़ा then सा it goes flying and lands on the brand new rug, you know. और इनका पैर थोड़ा फिसल गया और ये उड़ते हुए नए जो वहाँ पे रग बिछाया गया था उसके ऊपर वो पूरे सबके साथ गिरने लग गया। अब पूरा सब फैल गया And I'm था। like, what are you doing, you know? मैंने कहा, "तुम कर क्या रहे हो? Stupid, you क्या know? बेवकूफ हो तुम? You don't know how to walk. आपको पता नहीं चला कैसे है? This is how you're serving prasada? ऐसे प्रसाद सर सेवा करते हैं आप। I'm just like yelling at him, you know. मैं पूरा चिल्लाने Then लगा he's like, you know, he's like shocked, you know. और फिर ये पूरा And चौंक I'm गया। shocked. और मैं चौंक गया। And then later I was like, oh, Krishna fulfilled your desire, isn't it? फिर बाद में गए मैंने कहा कृष्ण ने आपकी इच्छा पूरी And then कर दी। he's like, remind me not to ask for this again, you know. फिर उसने पूछा मैं दोबारा इस इच्छा को कभी नहीं करूँगा भगवान से। Right? He's like, okay, when it comes, you know. I won't ask for it anymore, you know. कहा जब आएगा तो ठीक है वरना मैं इसको मांगने नहीं वाला इसको। Because it's like heavy, you know. ये काफी भारी होता है ये। Clean up this rug, you know. अभी साफ करो इसको। I like turn into like Nishringadev, you know. ऐसा मैं जैसे नरसिंहदेव में तब्दील हो गया। Ugra Nishringadev. उग्र नरसिंहदेव के रूप So he's like, whoa. में पूरा डर गया। So he had his little experience, right? इनका कुछ अनुभव So मिला। everything happens in due course of time. सब कुछ समय के साथ साथ होता है। One person said, oh, Guru, if you're my Guru, tell me all of my anarthas. एक व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि अगर आप मेरे गुरु हैं तो मुझे मेरे सारे अनर्थ बताइए। And I was like, slow down, you know. मैंने कहा धीरे धीरे। Like what you can understand, what you can digest, gradually, Krishna will reveal everything to you. जितना आप समझ पाएंगे, जितना आप ले पाएंगे, धीरे धीरे कृष्ण आपके सामने प्रकट करेंगे। And it's like, no, if you're my Guru, you know everything, then you should tell me all of my anarthas, all of my problems. उन्होंने कहा नहीं आप गुरु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको मुझे मेरे सारे अनर्थ आपको बताने होंगे And you should solve it. और आपको इसका समाधान करना होगा। Wow, I just met you, man, you know. मैंने कहा मैं तो अभी बस आपसे मिला हूँ। That's like a big asking, isn't it? आप बहुत बड़ी मांग रख रहे हैं मुझसे। I'm still trying to figure out who you're trying to figure out who I am. I'm trying to figure out who you are. आप अभी पता लगाने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ और मैं ये पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। And now artificially, sentimentally, you're just saying, I'm your Guru. और आप बनावटी रूप से भावनात्मक रूप से बस ये कह रहे हैं कि मैं And then आपका गुरु हूँ। demanding that I tell you everything. और आप मान रहे हैं कि मैं आपको सब कुछ बता And दूँ solve all of your problems on top of it. और सारे आपकी समस्याओं का समाधान कर दूँ इसके ऊपर आप कह रहे हैं। Wow, is it like this cheap? Is it like this? क्या ये इतना सस्ता है कि आसानी से मिले? So just be patient. लेकिन आप बस ठहरे रहो। Krishna knows what we can understand, and he knows how when to do it. कृष्ण जानते हैं हम क्या समझ सकते हैं और उनको पता है In due कब course कैसे of करना है। time. समय के साथ It's like a question of revelation. ये है प्रकाशित होने का सवाल। No, I want to understand everything right now. और नहीं मैं अभी सब कुछ समझना चाहता हूँ। It's like the child who goes to the school and says, I want a PhD जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तुरंत कहता है मुझे PhD की डिग्री चाहिए। on the first day of school.
पहले ही दिन स्कूल के दिन I want to be a PhD scholar. मुझे एक PhD का विद्वान बनना है। You want to be a PhD scholar? No? PhD You विद्वान want to बनना just be a चाहते हैं? devotee, right? आप That's भक्त बनो। better. ये That's ज़्यादा better. बेहतर है कि नहीं? Then you won't be puffed up. तब आप उतने ज़्यादा Like your काम father, नहीं you know? करेंगे, जैसे अभी हैं। He has some gyan, you know. इनके पास थोड़ा ज्ञान है, He thinks she's smart, you know. सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है। Anyway, keep trying to help him. कोई बात नहीं, अपनी उनकी मदद करने का Eventually प्रयास that will go away करते हैं। धीरे-धीरे ये सब चला जाएगा and he'll become bhakta. और ये भी भक्त बन जाएंगे, भक्ति आ जाएगी इनके अंदर, That would be nice. तो ये अच्छा होगा। That's the real dana, ये असल धन है, right? ठीक है? Otherwise the head becomes so big, वरना सर इतना बड़ा हो जाएगा, you can't fit inside the door, you know. आप इस दरवाजे में भी सही से घुस नहीं पाएंगे। When you're coming, we have to put some ghee on the side of the door, you know, और जब ये in case आएंगे, it gets stuck, you know. दरवाजे के बगल में हमें कुछ घी डालना पड़ेगा ताकि इनका सर जो है अंदर घुस सके, Just to slip through a little bit easier, you know. ताकि आसानी से फिसल के अंदर घुस सके सर। So, wow, everyone's getting what they need, huh? Is it like this? सबको वो मिल रहा है जिसको उनकी जरूरत है, ऐसा है या नहीं? Krishna always putting me in the hot seat, isn't it? कृष्णा हमेशा मुझे इस प्रमुख जगह पे बिठा के रखते हैं। Sometimes, you know, he's telling to say something, he inspired me to say something. I'm like, oh, this is going to be like hydrogen bomb if I say like this thing, you know. कभी-कभी कुछ चीज़ें मुझे अंदर से बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए प्रेरणा आती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे चीज़ कहनी चाहिए, और फिर मैं सोच रहा होता अगर मैं ऐसा कह दूँ तो ऐसा लगेगा किसी तरह हाइड्रोजन बम यहाँ फट It's जाएगा। going to be like explosion if I say this, you know. यहाँ ऐसा लगे कोई बड़ा धमाका हो जाएगा। And then sometimes I'm like, you know, trying to like, you know, skillfully avoid the fight, you know. और कभी-कभी मैं चालाकी से इससे बचने का प्रयास कर रहा हूँ। And then Krishna's like, are you going to surrender or not, you know? और कृष्णा कहते हैं आप शरणागत करोगे कि नहीं? You got to say it. आपको कहना ही पड़ेगा ये। So I'm like, oh, here it is, you know. ठीक है, चलो। It's like everything blows up, you know. And then afterward, I'm complaining to Krishna. You see, you put me in trouble. And you made me say this thing. I was telling you this is going to be a problem. और फिर ये जाके Sometimes a little bit complaining. तो फिर इस तरह से जाके फट जाता है। फिर मैं जाके कृष्णा से शिकायत करता हूँ, मैं कह रहा था कृष्णा हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपने मुझसे कहा दिया, अब हम समस्या में फंस गया हूँ मैं। I didn't want to do it. ये करना नहीं चाहता You हूँ, made me do it. आपने मुझे करवा दिया। Now all the trouble coming to me. अब सारा समस्या मेरे सर पे आ गया। And Krishna laughing. He said, very good. That's good. कृष्णा हंसने लगे, बहुत अच्छा हुआ। Now you really have to depend on me अब आप कसम में मेरे ऊपर निर्भर रहना होगा, to survive it. ताकि आप इसमें To जीवित रह tolerate सकें और इसको सहन कर पाएं। So, did you figure out the microphone yet? पता चल गया माइक्रोफोन कैसे काम कर रहा है? He's looking at the other end of the microphone. ये माइक्रोफोन के पिछले की तरफ देख रहे हैं। It's like, you know, with the phone, right? Isn't it the bottom? Is the bottom where the mouthpiece is? Is it like this? And the top is like where you hear? Is it like that? Is it true? Right? So you're supposed to speak in the bottom? Right? You can. I'm not technical. Is it true? Right? So then you see sometimes people are going, you know, they're screaming in the top of the phone. जैसे आपको भी पता है कि माइक्रोफोन के फोन के नीचे के साइड में बात किया जाता है, उधर से माइक्रोफोन रिसीव होता है और ऊपर के साइड स्पीकर होता है, तो कुछ लोग माइक्रोफोन के दूसरी तरफ जाके चिल्लाने लगते हैं फोन की दूसरी तरफ। There was like a big fight outside. I'm like, there's a fight starting. It was Gopal on the phone. ऐसा लग रहा था बाहर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है और मुझे बाद में पता चला गोपाल किसी में फोन में बात कर रहे हैं किसी से। He's screaming. और वो चिल्ला रहे थे फोन पे किसी पे। Right? He's talking like he's on the side of the road and like 18-wheeler trucks are going by. You know what I ऐसे mean? बात कर रहे थे जैसे कि वो रोड के किनारे खड़े हैं और 18 पहियों वाले जो ट्रक बड़े-बड़े वो वहाँ से गुजर रहे थे। इस तरह I'm still in Mayapur. मैं मायापुर में हूँ। Right? It's like a small village. You know what I mean? जैसे ये तो एक छोटा सा गांव है मायापुर। There's no need to scream. You तो know? चिल्लाने का जरूरत नहीं है। I'm still here in Mayapur. मैं अभी भी मायापुर में I'm हूँ। coming real soon. बहुत जल्द आ रहा हूँ। So, I'm trying to get to him, but he's having trouble with the microphone.
मैं तो इनकी तरफ जाने का प्रयास करा, लेकिन ये माइक्रोफोन से संघर्ष कर। You got to go back to college, आपको वापस कॉलेज में जाना get चाहिए, another degree. दूसरा डिग्री लेना You got to चाहिए। beg your parents for more money. आपको अपने माता पिता से भीख मांगना चाहिए और पैसा दें आपको, Then you'll be more indebted. ताकि आप और ज़्यादा कर्ज में जाएंगे। Then he has to work twice as many more hours. और फिर ये 2 घंटा डबल आपसे काम करे ज़्यादा। He has to learn how to become a closer, you know? उनको सीखना हो कैसे सारी चीज़ों को ये, Not just a friendly guy, you know? बस ऐसे मित्रता पूर्वक लोगों से बातचीत। Now he's like, you know, Uncle Raghu, you know? और फिर ये दूसरा अंकल रघु, चाचा रघु के जैसे बन जाएंगे। Uncle Raghu, he just comes over, tells some jokes, you know? जो चाचा रघु आते हैं, कुछ मजाक करते हैं आगे, Right? Brings the wife some flowers, you know, like this. You और know? कुछ फूल देते हैं आगे। You don't do that, right? आप ऐसा नहीं करते हैं, Candy? आप चॉकलेट देते No. हैं। I'm getting in big trouble tonight. You know, I should have signed something like I cannot be held responsible, like what's going to come out. You can't take me to the court, you know. आज मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, और मैं सोच रहा था कि मैं लोगों से ये हस्ताक्षर करवा लूँ कि मैं उस चीज़ की उत्तरदायी नहीं हूँ जो आज यहाँ होने वाला है। Then I feel more protected, तब मैं और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ, legally speaking. कानूनी तौर पे। So what's the question? क्या What's सवाल? Gurudev, you were saying other day, disciple always hearing his spiritual master. So, like when the spiritual master is in front of the disciple, it's easy and it's it appears very possible to hear directly. But when the spiritual master is not directly present, then once you told that to always remind yourself about the instructions that you have received, but it seems very difficult when the spiritual master is not directly present to always remind the instructions. So You have to associate within the family of the Guru. प्रभु का सवाल है कि हमारे कहते हैं शिष्य हमेशा गुरु से श्रवण करते हैं, और ये श्रवण ज़्यादा आसान होता है, ये देशों का श्रवण जो वो गुरु के व्यक्तिगत सानिध्य में होते हैं, व्यक्तिगत संग में होते हैं, और उनके संग में जब नहीं होते तो इसको याद रखना निरंतर मुश्किल होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको जो है उन भक्तों के संग में रहना है जो गुरु के बहुत करीबी हैं, गुरु के संसार में। That's the best case scenario. ये सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, Because automatically we're discussing, oh, Gurudev said like this, I got this instruction, Gurudev explained like this, quoting this Shastra, right? Everything becomes focused, more focused. तब फिर भक्त हमें बात करते रहेंगे, वो गुरुदेव ने ऐसे कहा था, गुरुदेव ने ऐसे चीज़ को समझाया था, गुरुदेव ने शास्त्र से ऐसे बताया था, ये कोट किया था, तो ऐसे हर चीज़ हमेशा केंद्रित रहेगी। But so I find devotees, Krishna made arrangement to meet devotees, they like to hear about Srila Govinda Swami, my Gurudev. तो मुझे ऐसे भक्त का संग मिल पाया जो लोग श्री गोविंद महाराज के बारे में सुनना पसंद करते थे, उनके विषयों के बारे में चर्चा करना पसंद So करते then I थे। can share with you about my Gurudev and my experiences with my Guru. That makes me remember my Guru. तो जो ये चीज़ें मैं अपने गुरु के साथ मेरे जो निर्देश मिले मैं उनका उनके साथ जब बांट सकता हूँ, तो मुझे मौका मिलता है कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाता हूँ। Then you're asking questions and then I'm remembering, oh, somebody asked my Guru that question. और जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो मुझे याद आता है कि मेरे गुरुदेव को भी इस तरह कभी किसी ने सवाल पूछा था, तो मुझे वो निर्देश याद आते हैं। And Gurudev referred to Prabhupada's books and teaching here and answered that question like this, और right? फिर गुरुदेव ने श्री प्रभुपाद की किताबों से ये चीज़ को ध्यान में रखी, उसको उत्तर दिया उस शिष्य के सवाल का, इस तरह से ये चीज़ें ध्यान So में it keeps it alive. इस तरह से ये चीज़ें जीवित That's the रहती easiest way. हैं। ये सबसे आसान तरीका है, Otherwise, very difficult. वरना बहुत मुश्किल, If not impossible. ये संभव नहीं होगा, Especially in the beginning. विशेष करके शुरुआत, Because there's not enough vapu, there's not enough personal association. कि पर्याप्त वपु या व्यक्तिगत संग नहीं होता। You have to have your own experience in the personal association. आपका स्वयं का अनुभव प्राप्त करना होगा उनके व्यक्तिगत संग में। And my association with my Guru primarily was just going and listening to him to speak Hari-katha, krishna-katha.
और मेरा संग मेरे गुरुदेव के साथ शुरुआत में विशेष करके उनके साथ जाके श्रवण करना हरि कथा कृष्ण का, बस इतना I didn't have some other seva. मेरे पास कोई अन्य सेवा नहीं I था was not some intimate, associate of my guru. और मैं गुरु का बहुत ही कोई करीबी I could शिष्य not नहीं just था। go in his room when all the other leaders were going in his room. मैं उनके कमरे में ऐसे कभी प्रवेश नहीं कर सकता था जैसे बाकी बड़े बड़े नेता भक्त Sometimes जो I है वो tried, प्रवेश करते थे। I tried to force myself in the room. कभी कभी मैं जबरदस्ती उनके कमरे में घुसने का प्रयास करता Gurudev was not happy with me, और गुरुदेव मुझसे खुश नहीं होते थे। And I realized, okay, this Gurudev wants to deal with me in a very particular way, तो मैंने ये देखा गुरुदेव तो बहुत ही विशेष तरीके से मुझसे बर्ताव करना चाहते हैं। So just be satisfied with what he's asking you to do. उसी से संतुष्ट रहिए जो वो मुझसे मांग रहे हैं That's your way to please him. और वही मेरा तरीका है मैं कैसे And उनको just प्रसन्न try कर to सकता हूँ। maximize it और उसी को जितना बेहतर कर whatever सकते time we have with our Guru. जितना भी समय है हमारे पास अपने गुरु के साथ Try to make it as productive and as nice and pleasing as possible. और ये जितना ज़्यादा बेहतर बना सके जितना अच्छा बना सके उतना संभव हो करना चाहिए। Be prepared और तैयार रहिए to be able to do that. और उसको कर पाने के लिए Then you can get mercy and blessing from the Guru. तो आपको कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा गुरु से। He'll pray on our behalf. वो हमारे तरफ से प्रार्थना करेंगे Then spiritual life is very nice, very quick. आध्यात्मिक जीवन बहुत आसान होगा बहुत जल्दी होगा। That's the secret of success. ये सफलता का रहस्य है। So don't try to figure out how is it practical. ये पता लगाने का प्रयास मत करिए व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है। This will drive you crazy. ये आपको पागल ना Right? Just know that that is the best possible, how do you say, environment and situation for you to be Krishna conscious. बस ये समझने का प्रयास कीजिए ये सबसे श्रेष्ठ परिवेश है जिसमें आप कृष्ण भावनामृत रह पाएंगे। And then anyway, Krishna will somehow make some proper arrangement और किसी भी तरह से कृष्ण किसी भी तरह की सही व्यवस्था करेंगे in due course of time. समय के साथ। Just be open. खुले दिमाग में रहिए। Pray to Guru Krishna. You know what's best for me. गुरु कृष्ण से प्रार्थना कीजिए आप मेरे जानते हैं मेरे लिए श्रेष्ठ क्या You है। can do and undo. आप कुछ भी कर सकते संभव व You असंभव think कर सकते Krishna हैं। doesn't understand all the complexities of our life? आपको क्या लगता है कि कृष्ण आपके जीवन की जटिलताओं को समझ नहीं सकते? You think that we have to explain all of this to Krishna? आपको लगता है हमें ये सब कृष्ण को समझाने की जरूरत पड़ेगी? But Krishna is saying, what do you really want? What's really important to you? लेकिन कृष्ण बस ये जानना चाहते हैं असल में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, What are your priorities? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं And we have to pass a test. और हमें उनके परीक्षा पास करना होगा। And if we pass the test, then Krishna, anyway, by his mercy, merciful arrangement, he'll adjust everything accordingly. और अगर हम उनकी परीक्षा पास करते हैं तो भगवान कृष्ण अपनी कृपा से सारी व्यवस्था सही तरीके से करेंगे। When I wanted to leave India, Gurudev was telling me to stay. जब मैं भारत छोड़कर जाना चाहता था तो मेरे गुरुदेव ने हमेशा कहा कि यहीं पे रहो। And when I wanted to stay in India, Gurudev told me to leave. जब मैं भारत में रहने का मैंने विचार कर लिया तो गुरुदेव ने कहा कि तुम बाहर चले जाओ। And it was always like so unexpected. और ये हमेशा मुझे कोई उम्मीद नहीं होती थी इसकी। And we have to just, whatever Guru Krishna say, they know what's best for me, then I have to trust them. और जो भी गुरु कृष्ण मेरे लिए चाहते हैं वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा और मुझे अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए And उसको put करने के लिए। faith in the words, instructions, और उसमें श्रद्धा रखना चाहिए उनके शब्दों में उनके निर्देशों में and pray for the strength to be able to execute it. और इस शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम उनके निर्देश को पूरा कर सकें। Then any benefit that's available will come if we execute that seva. और कोई भी फायदा हमें प्राप्त होगा अगर हम उस सेवा को कर पाएंगे। Whatever mercy and benediction and blessing is available will come if we'll surrender and heartily try our best to follow those instructions. जो भी हमें कृपा जो भी हमें आशीर्वाद या फायदा हमें मिल सकता है अगर हम अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करें उन निर्देशों को पालन करने के लिए उनको पूरा करने के लिए। Prabhupada says 2 mercies required. वो बात कहते हैं दो Mercy कृपा of की Krishna, जरूरत है। mercy of the Guru. कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा। And if you don't have Guru, it means you didn't get Krishna's mercy. अगर आपके पास गुरु नहीं है इसका मतलब अभी तक आपने कृष्ण की भी कृपा प्राप्त नहीं की। So if you want to try to convince yourself that you're doing devotional service and God, Krishna is happy with you, without getting Krishna and Guru's mercy, then that's your business. अगर आप गुरु कृष्ण को आश्वस्त करना चाहते हैं आप जो कर रहे हैं वो भक्ति है और कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं और असल में आपको कृपा प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप स्वयं को ऐसा कह सकते हैं बस। Then you can just act like a pious Indian man, आप बस एक पुण्य भारतीय व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं।
दिखावा कर सकता। I did my dharma. मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया, I did my Ganesh puja मैंने अपना गणेश पूजा कर लिया, and Durga puja दुर्गा पूजा, and this puja and that puja and this puja. Right? ये पूजा, You worship all the demigods, सारी देवी देवताओं को पूजा कर all लिया, of the forefathers, सारे पितरों को पूजा कर दिया, all of the ancestors. सारे पूर्वजों का। Right? There's so many obligations, तो बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं हमारे ऊपर, isn't it? है या नहीं? But it says if you surrender to Krishna, then you're no longer obliged to do all of these other things. ऐसा कहते हैं अगर आपने कृष्ण को शरणागत कर दिया तो आप इन सभी के आभारी नहीं रहते। If we don't surrender to Krishna, we're obliged to do all of those things. अगर हम कृष्ण को शरणागत नहीं करते तो हमारे ऊपर ये आभार है कि हम कर्तव्य को पूरा करें। And then who can do all of those things properly? कौन इन सारी चीजों को सही तरीके से कर सकता है? They're doing proper puja for all of the demigods. It's just a party, isn't it? क्या लोग सही तरीके से पूजा कर रहे हैं? rock and roll party. ऐसा लग रहा है कोई पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। I see them dancing, right? They're all intoxicated, right? They're all flipping around like fish out of the water, you know? ये सब जो है पूरी तरह से नशा करके नाच रहे थे गाने बजाकर, और ऐसा नाच रहे थे जैसे कोई मछली पानी के बाहर कूद गई हो। It's a very unique Indian dance, you know? ये बहुत ही विशेष भारतीय नृत्य है, Yeah, it's very unique. बहुत ही विशेष Every है। culture has some special dancing, you know? हर एक संस्कृति में कोई ना विशेष तरह का नृत्य होता है। So that's up to us. What do we really want? तो ये हमारे ऊपर है, असल में क्या And we'll be चाहते हैं। tested. Krishna will test us. और हमारी परीक्षा ली जाएगी, कृष्ण हमारी परीक्षा लेंगे। But if we want to pass the test, association, hearing and chanting, dedication to that, dependence on that process, this is absolutely requirement. तो अगर हम इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो भक्तों का संग, उनके संग में श्रवण करना, और इस कैसे हम उसको समर्पित कर सकते हैं और कैसे उसमें हम लगे रह सकते हैं, यही इसके ऊपर निर्भर करेगा। And if we cannot get pleasure hearing and chanting and dancing in Guru Krishna's family, with the Guru's family, Guru Samsa, Krishna Samsa, then how you think you're going to give up Maya's family? तो अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है भक्तों के गुरु कृष्ण के संसार में श्रवण कीर्तन और नृत्य करने में, तो आपको कैसे लगता है आप माया को छोड़ पाएंगे? We need a higher taste, more higher experience. आपको कोई ऊंचा स्वाद, ऊंचा अनुभव प्राप्त करना होगा। Without that association, without this serving in Guru Krishna's family, there's no higher social, spiritual experience. Then you're stuck in bodily platform and bodily relations. तो बिना इस गुरु कृष्ण के संसार में सेवा करके, संत करके, श्रवण कीर्तन करके अगर हम ऊंचा स्वाद नहीं मिला तो हम इस तरह से सामाजिक स्तर पे, शरीर के स्तर पे आसक्त रहेंगे और वहीं हम फंसे रहेंगे। Material relations all selfish. और सारे भौतिक संबंध हमेशा स्वार्थ से भरे होते हैं। As long as you're pleasing them and giving them, then they're happy with you. जब तक आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तब तक वो आपसे खुश रहेंगे। As soon as you don't give them for one moment what they're demanding, then they're uptight with you, isn't it? और किसी भी क्षण आपको वो नहीं देंगे जो वो आपसे मांग कर रहे हैं, तुरंत ही वो आपसे नाराज हो जाएंगे। Then they don't like you. फिर वो आपको पसंद नहीं करेंगे। And it's like, yeah, but I did this for you and this and that, and you know, you're trying to say, I'm trying to help you in so many ways, right? और फिर आप कहने का प्रयास करेंगे, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, बहुत कई तरीकों से मैंने आप लोगों की मदद करने का प्रयास किया। And then they'll say, well, what have you done for me lately? और फिर वो कहते हैं, लेकिन अभी क्या किया मेरे लिए? Okay, this you did before. I'm talking now. आपने वो सब चीजें पहले किया, अभी क्या किया मेरे लिए? What are you doing for me now? अभी क्या करोगे मेरे लिए? None of that counted before? No. क्या वो सब चीजें, उस पिछले चीज को जोड़ा नहीं जाएगा? बोले नहीं, वो सब जोड़ा What are नहीं you जाएगा। going to do for me now? अभी मेरे लिए क्या करके दोगे? So this is nice material, you know, relationship. तो क्या ये बहुत अच्छे भौतिक संबंध हैं? Or you talk to your family member and it's all about them. और क्या अभी अपने परिवार वालों से बात करेंगे और ये हमेशा सिर्फ स्वयं के बारे में बात करेंगे। Right? And then if you try to like put in a couple words like what makes you happy or what's interesting to you, they don't want to hear it. और अगर आप कुछ ऐसी चीज बताना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे जो आपको पसंद हो, आपको जिसमें रुचि हो, तो उसको सुनना नहीं चाहते हैं। They'll even say, look, I don't want to talk about you, I'm talking about me right now. वो कहते हैं, वो कभी कभी यहाँ भी कहेंगे कि मुझे आपके बारे में नहीं बात करना है, मैं पहले अपने बारे में आपको बताऊँ। Sometimes they'll tell you.
कभी-कभी वो ऐसा You're नहीं करते। interrupting me. I'm talking about me right now. I'm not talking about you. आप मुझे बीच में रोक रहे हो, मैं अभी अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा आपको। What kind of relationship is it? ये किस तरह का संबंध है? It's all about you. इसमें सिर्फ Pretty आपके much. बारे में ज़्यादातर समय। And then you say, can I just tell you something that makes me happy? No. और फिर आपको बता सकें कि मुझे आपको कोई ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जो मुझे खुश Can I करेगा? tell तो you नहीं। about something that really makes me peaceful and happy? No. I have no interest to hear it. क्या मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता सकता हूँ जो असल में मुझे सुख और शांति बनाता है? वो कहते नहीं, मुझे So then कोई you नहीं just चाहिए। have to completely compromise. आपको बस पूरी तरह से हमेशा And what makes them समझौता happy? करना होगा कि हमेशा क्या आपको खुश बनाएगा, उसी को समझौता करना होगा। This is a one-way, we call it in English one-way street. इसको हम अंग्रेजी में कहावत है एक ही रास्ता होगा। Right? So the family says my way or the highway, you know? तो परिवार कहता है या तो मेरे तरीके से या तो और कोई तरीका से। Right? When you go to the house, you realize it's just like one-way street. It's not going both ways. क्या आपको ऐसा लगता है जब आप घर में जा रहे होते हैं तो आपको भी ऐसा एक जैसा अनुभव होता है? Then you start saying, wait a second, you know? I feel, we used to say like, you know, you feel like a doormat, you know? या फिर हम ऐसा भी उदाहरण देते हैं, हम स्वयं को दरवाजे पे पड़े हुए पैर पोंछने वाले समान समझते हैं। Right? Like before you go in the house, you have some mud on your shoes, you know? You just like scrape it on the doormat, right? जैसे आप घर में घुसने से पहले घर के दरवाजे के बाहर पायदान पैर पोंछने के लिए होते हैं, उसमें पैर जूते के कीचड़ निकालते हैं। So you might as well just say, you know, I'm here, you know, just lay on the ground and let them just start, you know, cleaning the muddy feet, you know, because you're just a doormat, you know. तो कभी-कभी ऐसा ये उदाहरण दिया जाता है कि हम ये उदाहरण हमारे ऊपर कि हम पैर पोंछने वाले उस दरवाजे के पैर पोंछने वाले जैसे हैं, और जैसे हम घर आते हैं कहते हैं ठीक है लेट जाओ, हमको पैर पोंछना है तुम्हारे ऊपर। Yeah, Srivasi went to visit his mom. He didn't see her for years, you know. श्रीवास से अपनी माँ को देखने के लिए गए, माँ से मिलने के लिए गए, कई महीनों से अपने माँ And से she मिले। immediately started engaging him in construction projects. और तुरंत ही वो उनको जो है निर्माण के उनके बहुत सारे कार्य चल रहे थे, उसमें उन्होंने इनको लगा दिया He काम। like joined a slave labor camp, you know. ऐसा लगा जैसे गुलामी का किसी कैंप पे इन्होंने He's like begging his mother for a glass of water, you know. अपनी माँ से पानी का एक गिलास का भी मांगने लगे थे। It's like, Mom, I just wanted to say, you know, I'm happy to see you. I love you, you know. It's just, like, just keep working, you know. वो कहा कि I need this done by the sunset, you know. वो बस आए, माँ से कहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। कहते हैं ठीक है वो सब काम करना शुरू करो, जब तक धूप खत्म नहीं हो जाता हमें ये काम पूरा करना है आज। It's like he's in the gulag or something, you know, like in the prison camp. गुलाब जो जगह वहाँ है। Right? Then he came to hear and chant, right? Him and his wife were exhausted. और जब ये श्रवण कीर्तन करने के लिए आए यहाँ पे तो ये और इनकी पत्नी पूरी तरह थक के चूर हो She गई। looked like you went through hell, you know? और लगा कि देख के ऐसा लगा कि जैसे आप नरक से गुजर And गए। they're like, yeah, we're wiped out, we're exhausted, you know? मैंने कहा हाँ पूरी तरह थक के हम मरी चुके That's हैं। what happened, you know? मैंने पूछा क्या हुआ आप लोगों And they के साथ? said, you know, we were basically caught in the house doing construction, you know? We couldn't get out. हम असल में फंस गए थे ऐसी जगह पे जहाँ हमें निर्माण का कार्य चल रहा था, हम जाके फंस गए थे हमारे घर में। So like we're hungry, we're tired, we need rest, you know? This is after visiting the family, after not seeing them after 2 years, you know? तो पूरी तरह से भूखे हैं, पूरी तरह से थके हैं, और ये तब हो रहा है जब हम कई सालों से अपने परिवार से मिले नहीं, उनके मिलने के बाद हमारी ये हालत है। I remember one time I came back to my father's house. I didn't see him for a long time. मुझे याद है एक बार मैं अपने पिता के घर पे गया, मैंने कई समय से मैं उनसे मिला नहीं था, देखा नहीं था। So I'm surprising him like for his birthday or something like that. तो मैं उनको थोड़ा चौंकाना चाहता था, उनका उस समय जन्मदिन था, तो मैं सोचा उनसे मिलने जाऊंगा। And then he's with my brother, my younger brother, और फिर वो मेरे छोटे भाई के साथ थे, and they're getting ready to go in the car. और फिर वो कार में जाने की तैयारी कर रहे थे। And I just pull up in my car, right? और फिर मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ And he's like, पहुँचा। oh, you know, good to see you, you know? फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा तुमको देख के। And then he's like, you're here for some time? उन्होंने कहा कुछ समय यहाँ रहोगे? I'm like, yeah, I came to see you for your birthday, you मैंने know? कहा हाँ मैं आपके जन्मदिन के दिन आपसे मिलने आया हूँ। He said, well, me and your brother, we're going, we have to go someplace, you know? So maybe we'll see you tomorrow or something like this? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और तुम्हारा छोटा भाई हम किसी और जगह पे जा रहे हैं, हो सकता है हम कल तुमसे मिलेंगे। I fly all the way there.
मैं बहुत दूर से उड़ के उनके पास आया, So that was a good lesson for me, you know. तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा पाठ सीखने को मिला। These selfish people. ये सब मतलब ही स्वार्थी लोग हैं। They cannot even reciprocate on material platform. यहाँ तक कि भौतिक स्तर पे भी वो आपके साथ प्रतिफल आदान प्रदान Because he wanted to go with his friends, he wanted to go to some party, he has some other important thing to do, isn't it? क्योंकि वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है पार्टी करना चाहते थे, उनके पास अलग चीज़ थी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुझसे ज़्यादा। So they're just talking, you know, oh, I love you, you know, I'm always thinking about you. They have like these talking points, you know. तो वो बस बातें करते हैं कि वो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से वो बस मुंह की I'm बात। crying for you, I love you, I'm missing you, right? मैं आपके लिए रो रहा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। And then you try to tell them like 5 minutes something about what are you doing and what's interesting to you. They're like, oh, they're so disturbed, they cannot listen to anything. और 5 मिनट आप उनको कुछ वो चीज़ें बताने का प्रयास करें जो आपको पसंद है, जो आपकी रुचि के विषय हैं, और तुरंत वो कहते हैं मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, और वो उसको चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। They have no interest. So something that makes you so happy, they could care less. और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुखी बनाती है जीवन में, उसकी वो लोग कोई परवाह नहीं करते हैं। And as long as you're saying, okay, I'm just a doormat, and you just basically tell everything about yourself, and I'll just sit here and listen to everything you have to say, then oh, we have a nice relationship. और जब तक आप इस बात पे सहमत हों कि हाँ, मैं दरवाजे के बाहर ये पैर पोंछने वाला बना रहूँगा और आपकी बातें सुनता रहूँगा, आप जो भी कहेंगे मैं उसको सुनने के लिए तैयार यहाँ बैठा रहूँगा, तो हमारे बीच संबंध अच्छे तरीके से बना रहेगा। This is very pessimistic, isn't it? ये बहुत नकारात्मक सोच है। Am I being too negative? क्या मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से बात कर रहा हूँ? That's material relationship. ये है भौतिक संबंध। It's conditional. ये नियम शर्तों के आधार And it's selfish. और बहुत स्वार्थ के साथ है। So if that makes you happy to be in a conditional, selfish relationship where they don't care about your happiness, then that's your business. तो अगर आप ऐसे परिवार में रहना चाहते हैं, स्वार्थी परिवार में, जहाँ पे नियम शर्तों के आधार पर संबंध चल रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें रह सकते हैं। You want to invest in that relationship, go for it, you know. अगर आप ऐसे संबंध में निवेश करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं उसके पीछे। Any last thing? कोई आखिरी चीज? Yes. A psalm, a psalm. आसाम। He's always missing a psalm. ये हमेशा आसाम को याद करते रहते हैं। I lost my heart in a psalm. मैंने अपना दिल आसाम में खो दिया। Usually it's Vrindavan, right? But this is a psalm, you know. ज़्यादातर समय वृंदावन होता है, लेकिन ये आसाम है। He was going to get a tattoo with a psalm, and they said, no, you cannot get tattooed. This is not. Devotee doesn't do like this. ये जो अपने हाथ पे टैटू करवाना चाहते थे आसाम का, लेकिन कहा भक्तों को ये शोभा नहीं देता, भक्तों को ये नहीं करना चाहिए। It's like, if I put it up high enough, nobody will see it, you know. ये सोच रहे थे मैं इसको बहुत ऊंचा लगाऊंगा ताकि कोई देख नहीं पाएगा। Anyway, we chucked him out of it, you know. कोई बात नहीं, हमने शायद इनको भारी Not good. ये अच्छी बात नहीं है। Hare Krishna. In the previously you discussed like-minded devotee association. Like-minded? Yes, we did. What if you're crazy? Should you find like-minded people? तो वो पूछ रहे हैं हमेशा जो है I'm looking for some like-minded people, you know. I'm looking for some pagla. Some cuckoo clocks. These are my people. This is my tribe. They're part of my tribe. प्रभु का सवाल ये है, वो पूछ रहे हैं कि आप गुरुदेव हमेशा ये एक जैसे मानसिकता वाले भक्तों के संग के बारे में बात करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कैसा होगा अगर आप पागल मानसिकता में हैं और पागल मानसिकता वाले संग ढूंढ रहे हैं, यानी कि पागल लोगों के बीच ये मेरा कबीला है, और ऐसे पागल लोगों को ढूंढते हैं। So, what kind of people you want to associate with? तो आप किस तरह के लोगों के साथ संग करना चाहते हैं? Who likes? We have to find the type of minds that we want to become like. हमें इस तरह का मन ढूंढना चाहिए जो जिस तरह का मन हम बनना चाहते हैं। So if you're attracted to devotee qualities and devotees' behavior and nice service attitude, like this, right? Then you're like, oh, that's nice. I wish I could become one like that.
तो अगर आप आकर्षित हैं ज़्यादा भक्तों का गुण और भक्तों के किस तरह सेवा करने का भाव, इस तरह के गुणों से आप अगर आकर्षित हैं, इस तरह के गुणों के प्रति आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, so that means looking for, like-minded means we have to become like that. तो मतलब एक जैसे मानसिकता वाले भक्तों को ढूंढना, इसका मतलब हमें इच्छा करनी है कि हम उनकी तरह बन सकें। But if we're all crazy and miserable, who wants to become like that? लेकिन हम पागल और हमेशा कष्ट में रहते हैं, तो हमारे जैसा कौन बनना चाहता है? So we're supposed to, Prabhupada said, you're supposed to, if you're Krishna conscious, you have nice dealings with each other, it's very attractive, people will say, oh, that was very nice. I don't want to join with those people. तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे, ये लोगों को आकर्षित करेगा, तो जो लोग बाहर से देखेंगे वो कहेंगे हाँ मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। That's why we hide Adam. Usually we keep him in the back, इसीलिए हम एडम को छुपा कर रखते हैं, हम इनको पीछे कहीं छुपा कर रखते हैं। We don't want to scare the kids, हम बच्चों को डराना नहीं चाहते। Right? They'll be like, you want to become like me? Like, no. जैसे ये लोग आकर कहेंगे आप मेरी तरफ बनना चाहते हैं, और सब लोग कहेंगे नहीं, सब लोग दिखाएंगे। I'm so mean to him, aren't I? मैं बहुत मतलबी हूँ उनके प्रति। Should I be more nice to Adam? क्या मुझे और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए? What do you think? आपको क्या लगता है? Your father thinks so. आपके पिता ऐसा सोचते हैं। Yeah. He thinks I should be more nice to Adam. Sometimes I'm not as heavy because I don't want him to be upset with me. कभी-कभी मैं इन पे ज़्यादा भारी नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो नाराज हो जाए मुझसे। Because he's friends, right? So anytime I chastise you, he feels like some pain, Seriously, really. It's really like that. I saw it. I marked it. ये इनके दोस्त हैं, क्योंकि जब भी मैं इनको डांटता हूँ, मैं देखता हूँ ये इनको भी थोड़ा दुख पहुँचता है, क्योंकि इनको भी थोड़ा कष्ट पहुँचता है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, मैंने देखा इस बात को, मैंने इस बात को नापा है। It's like a mother, right? If you chastise the child, the mother's like, oh, it's like they're feeling pain, You're chastising the kid because he's being a rascal, right? And the mother's like, oh, this is so painful for me, जैसे आप किसी बच्चे को डांट रहे होते हैं, तो माँ के बच्चे को जब आप डांटते हैं, तो माँ को भी दर्द होने लगता है कि उनका दर्द, बच्चे का दर्द माँ भी महसूस करने लगती है। Because of attachment. क्योंकि कुछ आसक्ति है। So we're feeling some pain there. इसलिए हमको जो वहाँ दर्द होता है। So, you got your answer? आपको आपका उत्तर मिला? So we have to try to create a nice atmosphere. तो हमें एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना होगा। Nice consciousness, a nice mood, a nice service attitude, right? अच्छी चेतना, अच्छा मनोभाव, अच्छा सेवा का भाव। Otherwise, you're trying to be like a gentleman in front of the guru, and then you're acting like a demon with the other devotees, brothers and sisters. तो वरना आप जो है गुरु के सामने एक सभ्य व्यक्ति बनने का रवैया दिखाएंगे और बाकी भक्तों के साथ बर्ताव करना होगा, तो आप असुर के जैसा बर्ताव। So in front of the guru, we're all like saints, तो गुरु के सामने जो है सब साधु की तरह आते हैं। That's why anytime we're in Krishna, all the kids, right, when we're leaving, they're all like, right, I know all the stories because the parents are saying this kid's being a rascal, right? But I'm going out, and all the kids are acting like little saintly children, क्योंकि मुझे याद है जब कृष्णोदर में ये सारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, भक्त के बच्चे हैं, वो जब मैं वहाँ से बाहर जा रहा होता हूँ, तो सारे भक्त ऐसे सामने हाथ जोड़ के साधु के जैसे नाटक का दिखावा करते हैं। और लेकिन मुझे क्यों पता है, क्योंकि उनके माता पिता ने मैंने उनके सारे बदमाश वाली कहानियाँ मुझे सुना रखी है, लेकिन मैं जब जा रहा होता हूँ तो इस तरह मेरे सामने साधु बनने का नाटक करते हैं सारे बच्चे। And I say, look at the saintly children, and they just look like criminals, but they're just like, got some nice pose, but they look like they just got out of jail, They got scars and, their hands are a little dirty, but they're saints. ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जेल से छूट कर आए हैं, चेहरे पे कट का निशान बना हुआ है, हाथ में गंदे हैं, और लेकिन अभी साधु के जैसे हाथ जोड़ के दिखने का प्रयास कर रहे हैं। So we cannot fool, Guru Krishna. हम गुरु कृष्ण को बेवकूफ नहीं बना सकते। So we have to practice,
in all of our dealings. हमें इसका अभ्यास करना होगा अपने सारे बर्ताव रवैये में। What the Gurudev is teaching us, what he's trying to explain to us, we have to apply it. We have to try to practice it. क्या गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, क्या हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। Otherwise, why he's spending so many gallons and gallons of spiritual blood explaining it, all of those things to you? वरना क्यों ये अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपना रक्त बहा रहे हैं इतने सारे चीजों को हमें समझाने के लिए? Because he's hoping that we'll understand something and try to apply it and learn something. क्योंकि उनको उम्मीद है हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उन शिक्षाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे। So we have to practice it. तो हमें इसका अभ्यास करना होगा। Right? We're in a family. हम एक परिवार हैं। We're in Guru Krishna's family. हम गुरु कृष्ण के परिवार हैं। Everyone cannot just claim I'm with Gurudev. कोई बस ये I'm with ये दावा Gurudev नहीं and Krishna. I don't know about the rest of you people, you know. हर कोई आके ये दावा नहीं कर सकता मैं गुरु और कृष्णा के साथ हूँ, बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। You cannot think like that. आप ऐसा नहीं No, सोच सकते। everybody, Gurudev trying to take care of everybody. Everybody's in Guru Krishna's family. So let me try to help Gurudev to behave properly with them. तो हर कोई इस गुरु कृष्ण के परिवार में है, गुरु कृष्ण उनकी देखभाल करने का प्रयास करे, तो मैं कैसे गुरु कृष्ण की मदद करने का प्रयास करूँ इसमें, बाकी अन्य लोगों को भी इस तरह मदद करके। If you can help them and they take your help, try to help them, that will help me. अगर वो आपकी मदद कर सकते हैं और वो आपकी मदद देना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कीजिए, ये मेरी मदद करेगा। If you can't help them because you can't even help yourself, don't try to help them. और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद की भी मदद नहीं कर सकते हैं तो उनकी मदद करने का प्रयास मत कीजिए। And the last one is, if you can't really help them, at least don't make it worse for them. और आखिरी बात ये भी है, अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उनकी परिस्थिति को और बुरा मत बनाइए। So don't add to their problem. तो उनकी समस्या और मत बढ़ाइए। Because the more problem, the more disturbed they are, then that also comes back onto the Guru. The Guru then has to sort it out, help them to go through all of that. क्योंकि अगर उनकी समस्या बढ़ेगी और ज़्यादा परेशानियाँ उनकी बढ़ेगी तो ये भी फिर वापस गुरु की तरफ ही आएगा, क्योंकि अब गुरु को ही उनकी समस्या का समाधान करना होगा। So why make it worse for that person? तो फिर क्यों उसके लिए और ज़्यादा बुरा बनाए उस व्यक्ति के लिए चीज़? So we have to be conscious. We're in families, Krishna, Guru, and Krishna's family. तो हमें हमेशा ये चेतना रखनी होगी, हम गुरु कृष्णा के परिवार में हैं। So we have to learn how to behave properly. तो हमें ये सीखना होगा कैसे हमें अच्छे से बर्ताव करना है। Mother and father, they see the brother and sister fighting with each other, they're not happy. माता पिता देखते हैं जब भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो वो उससे खुश नहीं होते हैं। No one's going to agree on every point. That's not the point. ये बात नहीं है कि सभी लोग हमेशा एक ही बात पे सहमत हो पाएंगे। But at least have enough respect that you're respecting and dealing with each other in a more loving and affectionate, respectful way. कि कम से कम हमें एक दूसरे के प्रति इतना आदर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति थोड़ा प्रेम और स्नेह से और आदर से थोड़ा बर्ताव करना चाहिए। That will be pleasing to the Guru. That's what he's hoping that will create this type of atmosphere and mood. यही गुरु की हमसे उम्मीद है और इसी तरह से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, इसी भाव से इसी तरह को प्रसन्न करने Then के if भाव से। other outside people see that, they'll say, oh, this is a very nice mood, nice attitude, there's a nice people, nice qualities, nice behavior, it's attractive. Then they may say, well, let me associate with these people. और जब बाहर से लोग आकर देखेंगे वो कितना अच्छा रवैया है, बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं अन्य लोगों के साथ, तो ये उनको बहुत आकर्षित करेगा, तो फिर वो सोचेंगे मैं भी लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। If everyone's just selfish and just saying, anyway, Guru Krishna are happy with me, the hell with the rest of you. What if everybody's saying the same thing? अगर हमारी ऐसी मानसिकता है गुरु कृष्ण मुझसे खुश है, बाकी लोगों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सभी लोग इस तरह की सोचेंगे तो फिर कैसे होगा? I'm pleasing Guru and Krishna. मैं गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ। I'm making you miserable, but I'm pleasing Guru and Krishna. मैं आपको बुरी तरह कष्ट में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ। So if you're making someone miserable, that's pleasing to Guru and Krishna? क्या आप किसी को कष्ट में डाल रहे हैं, क्या ये गुरु कृष्ण को प्रसन्न करेगा? That's not also part of the seva to the Guru? क्या ये भी आपकी सेवा नहीं है गुरु के प्रति? Look, I just make cookies, all right? I'm the cookie man. That's what I do, you know? देखो मैं बस कुकी बनाता हूँ, मैं कुकी मैन हूँ, मैं उतना ही करने वाला हूँ। If I'm making cookies, everything's cool, everything's good. Guru and Krishna are happy with me. अगर मैं कुकी बना रहा हूँ सब कुछ ठीक है, गुरु कृष्ण मुझसे खुश हैं।
right? But we're like trashing everything and everyone else, right? But hey, Guru Krishna happy because I'm making cookies, you know. हम सब कुछ जो है तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सब कुछ इधर उधर कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि मैं कुकी बना रहा हूँ, गुरु कृष्ण मुझसे खुश हैं। Or whatever the seva is, right? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अन्य सेवा भी हो किसी की। Pitamba, I'm cooking, Guru Krishna happy with me. तो मैं रसोई कर रहा हूँ, पीताम्बर कहेंगे, प्रभु कहेंगे, मैं रसोई कर रहा हूँ, गुरु कृष्ण मुझसे खुश हैं। I don't care for all of you people. I don't know what are you doing, you know. मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब लोग क्या करें। I'm cooking, Guru Krishna happy with me. मैं रसोई करूँगा, गुरु कृष्ण मुझसे खुश हैं। You see, we're laughing, but really sometimes we're doing like that. हम असल में इस बात बहुत हंस रहे हैं, लेकिन असल में इस बहुत सोचने वाली So that's part of your seva. तो ये आपकी सेवा का एक भाग है। What about being in nice consciousness and being a gentleman or having some friendly devotee, love and affection, service attitude? That's also part of the instruction. लेकिन इस बात का क्या कहना कि अगर आप अच्छी चेतना में रहें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छे गुण प्रकट करें लोगों के सामने, दोस्ताना तरीके से प्रेम और स्नेह से भक्तों के साथ सभ्य तरीके से बर्ताव करें, ये भी इस सेवा का भाग है। You should think, what if you're distributing books, right? Somebody sees you, right? And you're miserable. कैसा होगा अगर आप ग्रंथ प्रचार And कर you're रहे हैं disturbed. और आप पूरी तरह चिंता में हैं और And you're like the only representative of the ashram. आप एकमात्र प्रतिनिधि हैं आश्रम के। Right? And then someone says, you know, after you distribute the book, they say, where do you stay? You say, oh, I'm in one ashram there, you know. और आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे वो आप कहाँ रहते हैं? So you should think, did I act in such a way that that person may possibly come to that ashram? तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस तरह से बर्ताव करूं कि ये व्यक्ति आश्रम में आने के लिए प्रभावित हो मुझे देखकर। Right? That's preaching also. ये भी एक प्रचार है, ये भी एक तरह का प्रचार है। So it's not just black and white, you know. ऐसा नहीं कि बस एक तरफ काला दूसरी तरफ सफेद It's है। more all-encompassing and it's more subtle. It's more involved. ये बहुत विस्तृत है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत सारी चीजें इसमें मिली जुली हैं एक साथ। All right? ठीक है? And we have to learn all of these things. और हमें If इस- we're like antisocial, and you're going to go to Goloka Vrindavan and be antisocial in Goloka Vrindavan? तो हमारा इस तरह का रवैया है और हम इस तरह से असामाजिक व्यक्ति हैं, तो हम क्या इस तरह से गोलोक वृंदावन जाके असामाजिक तरीके से रवैया रख सकते हैं वहाँ? Yeah, he's like a pagala, he's like a, you know, he's a, huh? Avadut. He's calling it spiritual avadut. ये सोच रहे हैं आध्यात्मिक अवधूत हैं, आध्यात्मिक You're like an animal, you know, you don't know how to deal with humans, you know? ये Like animal consciousness. ये पूरी तरह से पशु की चेतना में। It's like, wow, like caged animal, you know? जैसे अगर पिंजरे में बंद जानवर है, It's like you're going to unleash the caged animal in Goloka Vrindavan? कि आप ऐसे पिंजरे में बंद जानवर को क्या गोलोक वृंदावन में छोड़ेंगे जाके? You know, the demons, they're not there, you know what I mean? असुर नहीं होते हैं गोलोक वृंदावन में, They're in another place. दूसरे जगह होते हैं। Unleash it somewhere else, but not in Goloka Vrindavan. कोई भी दूसरी जगह इनको जाके छोड़ो, गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ सकते। So we can't be antisocial in the spiritual world, तो you हम इस know? तरह से असामाजिक जीव नहीं हो सकते हैं आध्यात्मिक। We have to become perfect gentleman and lady, devotee. हमें पूर्ण रूप से एक सभ्य व्यक्ति, सभ्य पुरुष, महिला We're बनना। made to be social. हम जो है सामाजिक। Krishna is never alone. कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं। You can't say, well, when I'm with Krishna, I don't have a problem. आप ऐसा नहीं कह सकते हो जब मैं कृष्ण के साथ रहूँगा। It's all these other people around him ये बाकी जो लोग आसपास उनके रहते हैं, that I'm having problems with. तब वो अगर नहीं रहेंगे तो Cannot say उनके साथ that. समस्या है। Me and Krishna, we're like this, you know? मैं और कृष्ण, We don't have a problem. Me and Krishna, we don't have a problem. मेरे और कृष्ण के बीच में कोई समस्या नहीं है। We're tight, हम लोग पूरे चिपके हुए। right? But all these other people hanging around, you know, लेकिन और जो उनके आसपास बाकी लोग रहते हैं, I don't really feel I have to deal with them. मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है मुझे इनसे कुछ बातचीत You're करनी going to चाहिए। go in Krishna's family and act like this? क्या आप कृष्ण के परिवार में इस तरह से बर्ताव कर सकते हैं? Mother Jashoda and, you know, the gopis and the gopas, and you're just going to be like, you know, can you leave me and Krishna alone? We have to, you know, we have conversation. Right? Yeah. Really? It's like this?
यशोदा माता वहाँ के गोप और गोपियाँ जो हैं उनको जाकर आप कहेंगे क्या कि कृष्णा को अकेला छोड़ दो, मुझे कृष्णा से कोई बात करनी है? You're going to ask the best devotees to leave because you have something to hash out with Krishna? आप जो है कृष्णा के सबसे श्रेष्ठ भक्तों को कहेंगे आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे कृष्णा के साथ कुछ बातचीत करनी है कुछ. So we have to learn how to be social, spiritually social. तो हमें यह सीखना होगा हम आध्यात्मिक रूप से कैसे सामाजिक स्तर पे कार्य कर सकते हैं. You gotta learn it. और हमें इसको सीखना होगा. It's not easy. ये आसान नहीं है. We have to start somewhere. लेकिन हमें कहीं से शुरुआत करनी है. Until we perfect it, you cannot go back there. और जब तक हम इसको इसमें स्थिति नहीं प्राप्त करेंगे हम वापस बहुत हम नहीं. And without being Krishna conscious, we cannot know how to think, how to speak, how to act. We have no intelligence, qualities, or skills. और बिना कृष्ण भावनामृत के हमें ये पता नहीं चल पाएगा हम कैसे सोचें, क्या बोलें, किस तरह से कार्य करें. हमें ये पर्याप्त बुद्धि नहीं मिल पाएगी कि हम कैसे उसको सही तरीके से कर सकें. It's like, at the zoo, they put the orangutans, right? They collect them from all other places in the world and then they just put them together and they just watch them and see if they can get along with each other, Is it like this? Let's just see if they don't kill each other. They're like, that's association, That's a low bar, man, Let's see if they don't kill each other, That'll be attractive if they don't kill each other, जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े चिड़ियाघरों में होता है, बहुत सारे अलग-अलग जगहों की दुनिया के बंदरों को एक जगह जमा किया जाता है, फिर उनको चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि देखते हैं ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और सबसे कम ये मापा जाता है कि एक दूसरे को मार ना डालेंगे. Sometimes they're fighting, the kids saying, "Mommy, Daddy, the gorillas they're killing each other," और कभी-कभी ये जो है Is this good? Is this safe? और कभी-कभी ये जो वनमानुष हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कितने बुरी तरीके से करते हैं. Should we get out of here? छोटे-छोटे बच्चे Should we bolt? Should we bolt out of here? तो छोटे-छोटे बच्चे जो है माँ बाप के साथ चिड़ियाघर में उन जानवरों को देखने के लिए गए होते हैं. वो कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए, भागना चाहिए कि वनमानुष आपस में इतनी बुरी तरह लड़ाई कर रहे हैं. Is this a good atmosphere? क्या ये अच्छा Are we वातावरण है? safe? क्या आप सुरक्षित हैं? Right? And the parents are like, well, they're not killing each other yet, और माता-पिता कहते हैं अभी तक एक दूसरे को मार नहीं डाला है. No punches being thrown, so now it's all right, अभी तक ये मरे नहीं हैं तो अभी तक सब ठीक है. I mean, talk about a low standard, मतलब इससे नीचे और क्या है स्टैंडर्ड? No punches are being thrown. It's still relatively attractive. अभी तक वो लड़कर मरे नहीं हैं तो अभी भी आकर्षित हैं हम इन सब चीजों से. Oh, Krishna. Relatively attractive. Mostly peaceful protest. जितना शांति से हो सके विद्रोह कर पा रहे हैं. They get like buildings are on fire. They're being interviewed. It's like, well, it's a mostly peaceful protest. It's like the buildings are on fire. People are getting hit by cars. Like mostly peaceful. ऐसा माहौल है जैसे अखबार वाले किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं और पीछे जो है बिल्डिंगों में आग लगी हुई है, लोग कार जो लोगों को टक्कर मार के लोग मर जा रहे हैं और कह रहे बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है यहाँ पे. और इस तरह से खबर फैलाई. They're getting shot in the streets. Like it's mostly peaceful. जैसे लोगों को रास्ते पे गोली मारी जा रही है और कह रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण माहौल है. Most of the people made it out of there alive. ज़्यादातर लोग जिंदा बचे यहाँ पे. What kind of standard is this? ये किस तरह का स्तर है? Did you go to the temple? Well, most of the people got out of there alive, से कुछ लोग मंदिर गए और बाद में ज़्यादातर लोग वहाँ से जिंदा वापस आए मंदिर से. There was no fighting, no fist fights, no punches were thrown. एक दूसरे को लोग घुसा नहीं मार रहे थे. So it was mostly peaceful sangha. तो ज़्यादातर जो है सामने संग मिला. That's not exactly like all attractive, you know what I mean? ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आकर्षित करे. So we have some work to do. I mean, let's be honest. हमें कुछ काम We got to clean it up. We got to clean it up a little bit. ईमानदारी से है तो हमें थोड़े सफाई करने की ज़रूरत है. It's like the parents when they're inviting the guests to come over and they're trying to get the kids to like take a shower and like shave. ऐसा होता है जब माँ बाप घर में Stop smoking marijuana. Can we just clean all this whole thing up? I got some people coming over, Can you look like gentlemen and lady, at least for an hour or two, Clean it up. Let's clean up the atmosphere here, जैसे Clean your room.
जैसे जैसे माँ बाप घर में किसी अतिथि को बुलाए होते हैं और अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि थोड़े देर के लिए सही से बर्ताव करो, उनको नहलाते धुलाते हैं, अच्छे से सेव करके आओ, गांजा पीना बंद करो, 1-2 घंटे के लिए कम से कम अपने कमरे के अंदर बैठे हो। इस तरह से माँ बाप के बच्चों को। Now I understand why Prabhupada said Sunday feast, you know? तो अब मैं समझ में आया कि प्रभुपाद क्यों संडे फीस्ट कहते हैं। Like you have the whole week to just try to clean up your act by Sunday, you know? कि आपके पास पूरे 1 हफ्ते का समय है, आप उन सारी चीजों को साफ करें अपने रविवार के दिन आके। It's like it's God's day, it's the Lord's day, you know, like just try to be like a, you know, like a devotee, like a human, civilized human being, gentleman, lady, just at least for one day, when the new people come, you know, when the guests come, you know. कि कम से कम जो जिस दिन रविवार के दिन जो है बहुत सारे नए भक्त मंदिर में आते हैं, नए लोग मंदिर में आते हैं, कम से कम उस दिन भक्त की तरह अच्छा गुण प्रकट करके कम से कम एक दिन भक्त की तरह बर्ताव करने का प्रयास Like let's start with one day, you कम से know. कम एक दिन से हम शुरुआत करने का We'll प्रयास even करते call हैं। it the love feast, you know, हम उसको just to प्रेम- inspire you, like what it's supposed to be about, you know. हम उसको प्रेम फीस्ट भी नहीं कहेंगे, कम से कम बस शुरुआत में ये दिखाने के लिए असल में ये It's ऐसा supposed to है be the love feast, कि विधि भोज ये है, not the Better Business Bureau. ये कोई व्यापार करने का संस्थान है। Oh, I'm in big trouble tonight. आज रात में बहुत मुसीबतों में फंसने वाला हूँ, So I took way too much of your time. तो मैंने आप लोगों को काफी समय ले लिया। Excuse me if I offended anybody. मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं किसी That को was नाराज कर दिया। totally my intention. I mean, totally not my intention. ये कोई मेरा उद्देश्य नहीं था ऐसा। Sometimes these things slip out, you know what I mean? कभी-कभी मेरी ज़बान फिसल जाती है। Most of you look happy. Most of you are alive. ज़्यादातर लोग आप लोग खुश दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जिंदा हैं अभी। Peter, I don't know, I think he was too much cow manure today, I think, something. Too much shoveling. He tired. और मुझे ऐसा लग रहा है पीटर आज काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर आए हैं, सफाई करके He's tired. थक चुके हैं वो। But everyone else, right? The mothers are smiling, thank God. लेकिन बाकी सब माता जी लोग बहुत खुश हैं। तो Indian बहुत अच्छी mothers बात है। against Maharajas, that whole organization will not be started at least from here. तो ये जो संस्था है माताओं की अभी तक महाराज के खिलाफ अभी तक खड़ी I नहीं hope हुई है। nobody taped this. और उम्मीद है किसी ने इसका सारा रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा। Don't let the word go out what's going on upstairs with that Maharaj. दुनिया को ही मत पता चलने दीजिए इस महाराज के ऊपर क्या होता है वहाँ पे। It's very dangerous. ये बहुत खतरनाक है। Thank you everyone, appreciate it. बहुत बहुत धन्यवाद। Shri Shri Gwanita ki, Srila Prabhupada ki, Srila Guru Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jai Prabhupada. Hari Krishna.